Namaste and a very good morning to one and all. I I welcome welcome you all to the National Conclave on Market Access Smallholder Farmers, Leveraging Digital Platforms and Inclusive Value Chains, organized by Grameen Foundation India, supported by Walmart Foundation. किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं अन्य इनोवेशन के माध्यम से बाजार तक जोड़ने पर आयोजित इस राष्ट्रीय समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Take this opportunity to extend a very hearty welcome to our chief guest, Dr. Ashok Dalwai, IAS and CEO of National Rain-Fed Area Authority at the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. We are honored to have you here, sir. I would also like to now invite Dr. Dalwai, Dr. A.K. Singh, Director and Vice Chancellor, ICAR's Indian Agricultural Research Institute, Prabhat Love, CEO, Grameen Foundation India, Brent Chisholm, Board Member, Grameen Foundation, Bharti Joshi, Chief Project Officer, Grameen Foundation India, Professor Neeraj, HOD, Rural Management, XIM Bhubaneswar, and Mr. Ashish Mandal, Director, Action for Social Advancement, to kindly come forward for lighting of the lamp ceremony. And kickstart this day on this auspicious note. I would also request Dr. S.G. Anil to kindly accompany the guest for the lighting of the lamp ceremony. गणनायकाय गणदैवताय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भारताय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भारचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Thank you so much. Everyone, please stand up on your seats for the national anthem. And on a light, positive, energized, patriotic note, let's start this day. A very warm welcome to all of you once again. It is widely known that the Indian economy relies heavily on agriculture. भारत की अधिकतर आबादी अपनी आजीविका के लिए एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती है. However, the truth of the farming landscape is that it is predominated by small land holdings owned by small marginal farmers.
The size of the land holdings directly affects the bargaining power of the farmers, their access to appropriate and affordable input service providers, and then their control over choice, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो या बाजारों से। और इसी को मद्देनजर रखते हुए the government of India has been actively promoting the formation and strengthening of farmer producer organizations. To empower FPOs in Uttar Pradesh, Grameen Foundation India, with support from Walmart Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Swiss Development Corporation, GIZ, and the government of Uttar Pradesh, implemented a project on market access enabled by digital innovation in India, or the Mandi project. The project sought to connect smallholder farmers, especially women, to market, finance, technology, and extension services. These efforts had a significant impact on the lives of 50,000 small and marginal farmers across 82 FPOs in 23 districts of Uttar Pradesh. This conclave is an initiative to discuss this and much more. An initiative to bring together stakeholders from diverse backgrounds to talk about the key concerns and probable solutions to improve the lives and livelihoods of smallholder farmers with a specific but deliberate focus on women. We've curated some exceptional panels where you'll get to hear from representatives from farmer producer organization, government, businesses, financial institutions, and civil society members. And I sincerely hope that this day allows you to participate with full gusto. आपके जो भी सवाल है आप जरूर हमारे पैनलिस्ट से पूछे ताकि आज का दिन और भी कोलैबोरेटिव और इंटरैक्टिव बन सके। Now, without further ado, I'd like to call on stage Prabhat Lal, CEO, Grameen Foundation India, to deliver the welcome address. Good morning and warm welcome to all of you. It's an honor and a privilege to be standing here in front of you today and to welcome you all. सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों और बहनों का जो कि आज इस रूम में हमारे पास आए हैं अलग अलग जिलों से अलग अलग स्टेट से प्रयागराज चंदौली आजमगढ़ गाजीपुर गुना मध्य प्रदेश से भी आए हैं करते हैं क्योंकि आज का पूरा डेलिब्रेशन जो है वो आपके बारे में है और आपके लिए है और उसमें आपकी भागीदारी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा है इसलिए आईएएस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रेनफेड एग्रीकल्चर एरियाज अथॉरिटी का स्वागत करते हैं डॉक्टर एकी सिंह जो कि आईसीआर से आए हैं डॉक्टर मुकेश गौतम जो पहले यूपी डास को लीड करते थे और अभी वर्ल्ड बैंक एंड के एडवाइजर हैं डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह जो कि अगेन वर्ल्ड बैंक एंड आईफैड के एडवाइजर हैं श्री अंजनी सिंह जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में है अभी रूम में नहीं है लेकिन वो हमारे को 11:30 बजे तक ज्वाइन करेंगे श्री विनायक जो कि वर्ल्ड बैंक से हैं प्रोफेसर नीरज कुमार जो कि एक्साम भुवनेश्वर से हैं और मेरे गुरु भी रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 27 साल पहले विजन ऑफ नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उनका एक जो खास था कि the poor are great worthy and provided you serve them right with the right products and timely uh, and that whole model has established and showed how around the world hundreds of millions of low income people and women and farmers have benefited by access to microcredit microfinance and then of course a more diverse range of financial services. So in Grameen Foundation we are inspired by that vision. Grameen Foundation का जो मिशन है हम कहते हैं कि we want to enable the poor especially women to overcome poverty and hunger और पॉवर्टी और हंगर को ओवरकम करने में जो एग्रीकल्चर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे किसान ही प्रोड्यूस करते हैं और एग्रीकल्चर में ही प्रोड्यूस होता है और देश में हमारे भारत में तकरीबन 50% से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं और जो कि हमारे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी है 18 से 20% हमारा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी आता है तो इमेजिन इतना बड़ा एक ये महत्वपूर्ण चीज जो है तो पॉवर्टी और न्यूट्रिशन दोनों में ही एग्रीकल्चर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ग्रामीण फाउंडेशन पिछले has been working as we mentioned with support from Bill and Melinda Gates Foundation, Swiss Development Corporation, GIZ, with the support of government of Uttar Pradesh, UP DAS, State Institute of Management in Agriculture,
हॉफेट और तमाम संस्थाओं के साथ, तो वी आर रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देयर सपोर्ट। ग्रामीण फाउंडेशन एक तो एग्रीकल्चर में काम करती है, उसके बारे में मैं 2 मिनट में बात करूंगा। इसके अलावा जो है हम एक डिजिटल फाइनेंस में भी काफी कार्य करते हैं, इनोवेशन इन डिजिटल फाइनेंस। हमारा मुद्दा ये है कि हमारे लास्ट माइल तक कैसे डिजिटल फाइनेंस का एक्सेस पहुंच पाए, और एवरीवन, लो इनकम पीपल, women, smallholder farmers, small businesses and merchants, how they can improve their lives and manage their financials better by accessing and using a wide variety of financial services enabled through digital platforms. We also work a lot with women entrepreneurs. हमारा ये मानना है कि जैसे भारत में women's workforce participation has been actually unfortunately falling for quite a few years, and that's a huge area of concern. And हमें ये भी पता है कि हमारी इकोनॉमी में जो जॉब्स हैं वो, हमें जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स चाहिए, और जॉब क्रिएटर के लिए आपको एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। तो इस मुद्दे पे हम कार्य कर रहे हैं कि महिला उद्यमों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो हम बहुत सारे महिला उद्यमियों के साथ काम करते हैं, दिल्ली शहर में भी काम करते हैं, और कई सारे स्टेट्स में भी काम करते हैं। सो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक हमारा एरिया ऑफ फोकस है। और जो चौथा हमारा फोकस एरिया है वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। खास करके हम कार्य कर रहे हैं कि जैसे न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए, उसका भी एग्रीकल्चर से बहुत क्लोज ताल्लुक है, कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटीज जैसे कि आईसीआर के अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है। तो कैसे कमोडिटीज लाइक जैसे आपका गेहूं है, चावल है, या आपका मस्टर्ड है, इसमें अलग अलग जो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज आई हैं, जो जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो जरूरत होती है हमारे शरीर को एक पोषण के हिसाब से, तो उसकी अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सके, उसकी उत्पादकता और मार्केट एक्सेस कैसे बढ़ाई जा सके। तो इन 4 मुद्दों पे हम ग्रामीण फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। हम आज के डेट में देश के करीब 4-5 स्टेट्स में डायरेक्टली कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी अपनी फील्ड टीम्स है, which includes यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। एंड उसके अलावा करीब 8 से 9 स्टेट्स और हैं जहाँ पे कि हम डायरेक्टली काम नहीं करते, लेकिन हम दूसरे अपने पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। सो काफी बड़े स्केल पे हमारा पहुंच है ग्राउंड पे। मंडी प्रोजेक्ट के बारे में मैं 2 मिनट लूंगा, एंड देन आई वाइंड अप। मंडी प्रोजेक्ट जैसे मैं बताया कि वॉलमार्ट फाउंडेशन के सपोर्ट से पिछले 2.5 साल से कार्य कर रहा है, और खास करके डायरेक्टली 40 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ईस्टर्न यूपी में कार्य कर रहे हैं, करीब 30,000 फार्मर्स के साथ। 2 ऑब्जेक्टिव पे मंडी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा था। पहला, कि कैसे स्मॉल होल्डर फार्मर्स, जो कि करीब 85% फार्मर्स हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं, उनका इनकम एंड रेजिलियंस कैसे बढ़ाया जाए, इंप्रूव किया जाए। एंड दूसरा मुद्दा था कि कैसे उनकी हम विमेन्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स एंड फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन उसको बढ़ाया जाए। और इस 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने 4 एक्टिविटीज पे काम किया। वर्किंग ऑन एक्सेस टू कैपिटल for FPOs and for the smallholder farmers, working on access to market for the farmers so that they can sell their outputs and produce. तीसरा था कि bringing technology and digital platforms so that the farmers can benefit by access to these digital platforms, and use data for decision making. And चौथा था, of course, working a lot on improving women's participation in the FPOs as members, as board of directors, and in agriculture value chains. We have had some, good success that we all feel very proud of. लेकिन हमें ये भी पता है कि बहुत ज्यादा अभी दूरी तय करनी है, बहुत आगे दूर तक जाना है, और हमें जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, चैलेंजेस भी उतनी ही ज्यादा है। तो उन चैलेंजेस को हम कैसे भविष्य में सॉल्व करें, इसकी वजह से आज का ये कॉन्क्लेव जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव है, जिसमें कि हम आप सबका राय, आप सभी का इनपुट चाहेंगे और कोलैबोरेशन चाहेंगे कि हम फ्यूचर में और भी बड़े स्केल पे और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल कार्य कर सकें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड we have a short video 4.5 minutes जो कि अब हम दिखाएंगे, और उसके बाद जो है हम प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। So we can just have a short 4.5 minute video on the Mandi project, and then we go ahead. Thank you so much. In India, we believe that when poor rural women given the right resources, they can transform the lives of their families and larger communities. Brahman Foundation India's vision is to enable the poor, especially women, to create a world without poverty and hunger. Over the years, our projects have touched the lives of over a million women. We aim to help a billion and contribute to the UN's Sustainable Development Goals of no poverty, zero hunger,
good health and well-being, gender equality, and decent economic growth. With financial support of Walmart Foundation, we have been implementing a project called Mandi or Market Access, enabled by digital innovation in India in eastern Uttar Pradesh. Mandi's goal is to strengthen the capacity of farmer producer organizations or FPOs to connect smallholder farmers, especially women, to markets and finance, and to improve the farmers' incomes and resilience. कृषि हमारे देश करीब 50% से ज्यादा उत्पादन करने का साधन है। इसमें लघु और छोटे किसान और महिला किसानों की खास करके भागीदारी होती है। करीब 50% किसान हमारे देश में लघु और मध्यम किसान में आते हैं और खेतों में जो कार्य होता है इसमें महिलाएं 60 से 70% कार्य महिलाएं करती हैं। लेकिन उन्हें भी कार्य करने में 4 मुख्य दिक्कतें आती हैं। पहला धन का अभाव, दूसरा बाजार तक पहुंच का अभाव, तीसरा तकनीकी जानकारी का अभाव और चौथा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से महिलाओं की भागीदारी कम है। पिछले कई वर्षों से वर्मा फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामीण फाउंडेशन मंडी प्रोजेक्ट के तहत इन 4 समस्याओं पर कार्य कर रहा है और हमें अच्छी सफलता मिली है। इसमें हमने देखा है कि एफपीओ के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, एफपीओ का टर्नओवर बढ़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा वो मिली जानकारी ऐसे सरकारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस पा रहे हैं और हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा के और भी ज्यादा एफपीओ के साथ और भी ज्यादा किसानों से कार्य करना चाहते हैं, बड़े स्तर की तैयारी की। Mandi tailors capacity development plans for the FPOs to show them how to strengthen their market linkages and sustain operations. Mandi has helped 75% of the FPOs get financial products such as working capital credit and term loans to build infrastructure. Our unique network of women entrepreneurs called Grameen Mitras has helped farmers and their families become aware of the loans and services they can get and the technologies at their disposal to improve farming. Like all Grameen interventions, Mandi also helps women join the mainstream by holding gender dialogues and training sessions and encouraging gender sensitive agri-value chains. Mandi has powered a 122% increase in membership of women in FPOs and a 25% increase in women in governance and management roles. Mandi has supported FPOs to improve their data collection and its usage, better access to organized markets. FPOs have seen their revenues increase by an average of 230%, while farmers have increased their input and output surface uptake by 200% and 367%, respectively. Mandi has helped the FPOs digitalize data of over 44,000 farmers, 37,000 fields, and 48 crops. Today, 38 FPOs use live dashboards to gain data-driven insights, optimize their farming processes, and improve profitability. The project has also introduced more than 10,000 smallholder farmers to an app-based nutrient management system called the Rice Sweet Crop Manager, developed by International Rice Research Institute. Mandi has been able to fulfill its primary objectives, strengthening the capacity of FPOs, opening up financial opportunities, and empowering smallholder farmers, especially women, to get easier market access. The FPOs now use data-driven insights, which have helped increase smallholder farmers' incomes and resilience, especially during the COVID-19 pandemic. At Grameen Foundation India, we would like to thank the Walmart Foundation for its support that has put the glow of hope, happiness, and prosperity on every. Proceeding ahead, it is my absolute privilege and honor Rain-Fed Area Authority at the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, to deliver the keynote address. So I'll take a minute to read Dr. Dalwai, a member of the 1980. So please stay on stage. We'll just take a minute or so. Dr. Dalwai is a member of the 1984 batch of Indian Administrative Service and has served in the states of Odisha, Karnataka, and has been with the Government of India since 2010. He's extensively worked in the legislation and reform.
His 14-volume report as the chairman of Interministerial Committee on Doubling Farmers' Income is recognized as one of the most comprehensive and evidence-based strategies. It's an honor to have you here, sir. Over to you. Okay, thank you. Good morning. Thank you, Dhanvi, for the kind words. My pleasure this morning to be amidst all of you, and particularly to the farmer friends. आपको थोड़ा मुझे क्षमा करना पड़ेगा मंजिल, and also suggest solution to the agriculture sector in particular, and in general to everyone who either does not own assets or owns assets but are too small in size. We are all aware that access to assets, entrepreneurship, but it's not easy to transition from challenges at both riding on the back of technology. Again, based on technology and adopting appropriate management principles and business principles. Therefore, yes, I'm happy to see that still people are at it. Small is Beautiful, which is now 50 years old. Now it is called a vintage book. That's what is the title now. He was that famous psychologist Abraham Maslow's need of self-actualization. Therefore, these fundamental issues that deal with human being must be kept in mind. Always we've been focusing on growth of industries, growth of agriculture. But what does growth do? Does growth automatically bring about a change in the lives of people? Growth and development has now for some time been substituted rightly by growth with development. But now I think time has come to say that we move further from growth with development to development, growth for development. So when we now talk about the farmers, because they are the first private entrepreneurs of our civilization, it is the farmers who in unity of people, harmony, and simultaneously can be, we need to shift from fossil based, fossil resource based manufacturing systems to bioresource based manufacturing systems. Therefore, whether it is the materials or the enzymes or the fuels or any other kind of commodity which are all being generated using fossil resources, adding to huge amounts of greenhouse gases, need to be shifted to use ensuring that the raw material as a feedstock for industry is available on a continuous basis. And as we do that, we need to focus on promoting micro industries. So whether farmer producers organization can do agriculture plus micro industries. And when we step into micro industries, we're actually getting into secondary agriculture. So India value counts as the grains are. So I think there's a lot that we can do. That means there's a hope. Let's be optimistic. We bring in all modern management principles, appropriate technology, combined with our desire to help these people. Thank you, sir. And before I let you go from the stage, I would like to
call on stage Prabhat Lal to kindly felicitate Dr. Dalwai. Thank you so much, sir. It's such a treat to learn from your rich experience for the entire audience. Thank you so much. Mr. सभी से मैं चाहती हूँ कि अपने फोन Please कृपया करके Children Research Institute deliver the special address. Dr. Singh has been engaged in teaching and research for several years and brings with him a rich and diverse national and GIZ स्विस फाउंडेशन वॉलमार्ट के सहयोग से आयोजित इस गोष्ठी में मैं पूषा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत। एक सर्वोच्च संस्थान है कृषि अनुसंधान शिक्षा और शोध के क्षेत्र में। ये करीब 118 वर्ष पुराना संस्थान है। 1905 में स्थापना हुई थी और 1935 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया पूषा बिहार से, वहां पर एक भूकंप आने की वजह से। तब से लेकर में और प्रसार में निरंतर विशेष अनुसंधान जिनका मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा, और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कैसे उनको हम महिला किसानों से, छोटे किसानों से जोड़ें और उनका लाभ बढ़ा सकें, इन बातों पर मैं चर्चा करूंगा। एक नई शोध हम लोगों ने करी है के रूप में संरक्षित किए गए हैं और काला नमक को भगवान बुद्ध का प्रसाद माना जाता है उस क्षेत्र के लिए। और इन 11 जिलों में आपका गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर ये क्षेत्र आते हैं। परंपरागत काला नमक की किस्म बहुत लंबी होती थी और अक्सर गिर जाती है, पैदावार बहुत कम होती है, 20-25 क्विंटल एक हेक्टेयर के ऊपर शोध कर रहे थे और हम लोगों ने काला नमक की 2 बौनी प्रजातियां विकसित की हैं। अभी इसी वर्ष वो विमोचित हुई है राज्य सरकार के द्वारा, बाद में केंद्र के द्वारा नोटिफिकेशन हुआ है। उनका नाम है पूषा नरेंद्र काला नमक 1 और पूषा CRD काला नमक 2। ये दोनों बौनी प्रजातियां हैं। इनकी ऊंचाई मुश्किल से 80 सेंटीमीटर होती है, पैदावार 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि परंपरागत काला नमक की पैदावार जो है 25 क्विंटल होती है। गुणवत्ता में परंपरागत से अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है, स्वाद बहुत अच्छा है। किसान तो इसको जब तक हम बाजार से नहीं जोड़ेंगे तब तक किसान को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने पिछले वर्ष काफी प्रयास किया था, किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया था, लेकिन अपनी पहचान है। अगर बाजार से इसको हम जोड़ें और खासकर उन देशों में जहां पर भगवान बुद्ध को या बौद्ध धर्म को माना जाता है भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में, क्योंकि GI की जो एप्लीकेशन काला नमक की है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि ये भगवान बुद्ध की देन है काला नमक उस क्षेत्र के लिए। तो इसमें व्यापार की एक बहुत बड़ी संभावना है जिसका सीधा लाभ छोटे किसानों को मिलेगा। इसी दिशा में जैसा कि हम लोगों ने प्रयास पहले किया था, बासमती की परंपरागत किस्में बहुत लंबी होती थी, गिर जाती थी, पैदावार बहुत कम होती थी। और अब जो उन्नत किस्में है बासमती की, उसमें चाहे पूषा बासमती 1 से लेकर के 1121, 1509, 1692, 1718, 1637, 1728, 1692, ये सारी नई किस्में हम लोगों ने जो विकसित की हैं, इनकी पैदावार करीब 6 टन प्रति हेक्टेयर है, 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि परंपरागत बासमती की पैदावार मुश्किल से 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी। इसकी वजह से बासमती के उत्पादन में एक क्रांति आई और आज हमारा देश से प्रतिवर्ष बासमती का जो निर्यात है वो करीब 38,000 करोड़ रुपए का होता है, जिसमें पूषा संस्थान की किस्मों का योगदान 100% है, क्योंकि इसी संस्थान के द्वारा ही बासमती किस्में अधिक उपज देने वाली विकसित की गई। पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने 3 नई किस्म निकाली, जिसमें 2 बीमारियां विशेष रूप से जो लगती थी, जिसकी वजह से हमारा चावल निरस्त कर दिया जाता था यूरोपियन यूनियन में। हमारा निर्यात जो है करीब 6 लाख टन था 2016-17 में, और 2020-21 में घट करके 2.5 लाख टन आ गया। कारण कि एक विशेष फंजीसाइड होता है जिसको हम ट्राइसाइक्लाजोल बोलते हैं, उसका रेजिड्यू पाए जाने के कारण जो है, जिसकी लिमिट यूरोपियन यूनियन ने 0.01 ppm रखी है, जो कि निर्धारित मानक से बहुत कम है। अमेरिका में 3 ppm पे निर्यात होता है, जापान में 8 ppm पे होता है इस फंजीसाइड के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन में यह 0.01 ppm, 1 मिलीग्राम जो ट्राइसाइक्लाजोल 100 किलोग्राम चावल में। तो खरीदने वाले की अपनी इच्छा है और कोई अगर उस पे खरीदना चाहता है तो उसको आप वादे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना मानक सुधारना होगा।
को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बासमती की 3 नई प्रजातियां, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 पिछले वर्ष ही हमने विमोचित की। इनमें पत्ती का झुलसा रोग जो बैक्टीरियल ब्लाइट और झोंका रोग जिसको हम ब्लास्ट की बीमारी कहते हैं बिल्कुल नहीं लगता है। तो जब बीमारी लगेगी नहीं तो आपको दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं है, और जो दवा नहीं छिड़की जाएगी तो रेजिड्यू या अवशेष मिलने का प्रश्न नहीं उठता है। दवा का खर्च बासमती राइस में इन बीमारियों से संरक्षण के लिए कम से कम 3,000 रुपए प्रति एकड़ का होता था, तो 3,000 सीधे वो बचा इन रोग रोधी किस्मों के आने से। दवा नहीं छिड़कने से रेजिड्यू नहीं आया तो उसका बाजार में मूल्य अच्छा मिला, और चूंकि बीमारी नहीं आती है तो उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो जो लागत में कमी, उत्पादन में वृद्धि और उत्पाद का अच्छा मूल्य, ये तीनों चीजें मूल मंत्र हैं अधिक लाभ कमाने के लिए। इन किस्मों से संभव हो पाया है, और आगे आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि बासमती का निर्यात और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 जिले आते हैं जो बासमती खेती के लिए चिन्हित किए गए हैं। बासमती बीजीआई में प्रोटेक्शन है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विशेष रूप से काफी बड़ी संभावना है बासमती में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करने के लिए। इन रोग रोधी किस्मों के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बिल्कुल संभव है, क्योंकि आपको दवा का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके अलावा बायोफोर्टिफाइड किस्मों की जिक्र किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिसमें पूसा संस्थान के द्वारा करीब 35 किस्में निकाली गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको विमोचित किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि इन किस्मों में आयरन, लोहा तत्व, जस्ता तत्व 3 गुना 4 गुना मात्रा में है, प्रोवाइटामिन ए ज्यादा है, लाइसिन ट्रिप्टोफान ज्यादा है। चाहे हम बायोफोर्टिफाइड मेज की बात करें, चाहे मसूर की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, इनको किस प्रकार से हम मूल्य श्रृंखला में लाएं और उत्पादन से लेकर के बाजार तक उपभोक्ता तक इसको जोड़ें। क्योंकि किसान बायोफोर्टिफाइड किस्मों को सिर्फ इसलिए नहीं लगाएगा कि वो जैव संवर्धित है, बायोफोर्टिफाइड है, उसमें नहीं लगाएगा। एक साधारण उदाहरण मैं अक्सर देता हूं कि जब कोविड का समय चल रहा था तो उस समय एक टैबलेट हम लोग जिंकोवा खाते थे, उसका दाम जो है 6 रुपए होता था, और उसमें 30 पीपीएम जो है जिंक पाया जाता है। तो 1 पीपीएम जिंक का दाम जो है जिंकोवा के माध्यम से हम ले रहे थे, वो करीब 20 पैसे आ रहा था। अगर हम बायोफोर्टिफाइड बाजरे की बात करें तो सामान्य बाजरे में आयरन की मात्रा 40 पीपीएम होती है, बायोफोर्टिफाइड में ये 80 पीपीएम है। तो 40 पीपीएम जो आयरन इसमें बढ़ा, सिर्फ उस आयरन की मात्रा का मूल्य अगर से हम निर्धारित करें तो ये जो है करीब करीब 600 रुपए सिर्फ आयरन की जो अधिक मात्रा है। 1 किलो बाजरे में 1 कुंटल बाजरे का दाम 600 रुपए आयरन ज्यादा होने की वजह से होना चाहिए। सिर्फ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके आधार पे अगर एमएसपी का निर्धारण होगा या बाजार का मूल्य तय किया जाएगा तो उतना ही काफी नहीं है, क्योंकि धान और गेहूं में पोषक तत्वों के नाम पे कुछ नहीं होता है। अगर बाजरे में, रागी में और मड़ुआ में, कोदो में, कुटकी में, सावा में पोषक तत्व ज्यादा हैं तो उत्पादन के अतिरिक्त उत्पादन लागत उसमें बहुत कम है। अगर उत्पादन लागत के आधार पर उनका मूल्य निर्धारित किया जाएगा तो किसानों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उपभोक्ता जब पैसा देता है तो उसमें पोषक तत्व है, उसके लिए पैसा देता है, और उस पोषक तत्व के द्वारा दिए गए पैसे का जो स्थानांतरण है वो किसान को भी होना चाहिए। तो मूल्य निर्धारण में एक नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है, खासकर जब हम पौष्टिक अनाजों की, मोटे अनाजों की या श्री अन्न की बात करें। और जब तक इसको हम इससे नहीं जोड़ेंगे तब तक हम चाहे जितना कोशिश कर लें, किसान इसको नहीं अपनाएंगे। किसान तभी अपनाएंगे जब उसको उसका लाभ मिलेगा, और किसान ही पैदा करने वाला है तभी बाजार में आएगा। इसके अलावा कुछ नई विधाएं हैं जिसके क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें एक विधा है कार्बन फार्मिंग की या कार्बन क्रेडिट की। जैसा कि आप जानते हैं, जो रिजेनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हैं, ऐसी कृषि कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जो अमेरिकन कंपनी है इंडिगो, उसके साथ माइको ने मिलकर के ग्रो इंडिगो कंपनी बनाया है। इन्होंने करीब 80,000 किसानों का एनरोलमेंट अभी पंजाब हरियाणा में किया है, जिसमें कार्बन क्रेडिट के रूप में, जैसे अगर धान की खेत में आप पराली को जलाएं नहीं, उसको खेत में मिलाएं, सड़ाए गलाएं, तो इसका प्रदूषण एक मूल्य कार्बन क्रेडिट किस तरह की है उसके ऊपर 30 से लेकर के $40 के आसपास है। अगर आप लेजर लेबलिंग करते हैं, बायोलॉजिकल का प्रयोग करते हैं और सभी रिजेनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रोसेस का प्रयोग करते हैं तो 1 हेक्टेयर में करीब 7-8 कार्बन क्रेडिट आपको मिल सकती है। 8 कार्बन क्रेडिट का $30 के हिसाब से
डॉलर हुआ, जो कि अगर रुपए के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो 25,000 रुपए आपको प्रति हेक्टेयर काम कर भी रहा है। अब जो किसान हरी खाद का प्रयोग कर रहे हैं मान लीजिए, या लेजर लेवलिंग कर रहे हैं, धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनको अभी कोई इसका फायदा नहीं मिल रहा है। उसके द्वारा जो उत्पाद हो रहा कमी आती है। तो इस चावल के अगर बैग पे लिखा जाए कि लो कार्बन राइस और उसका बाजार में मूल्य 20 रुपए के बजाय अगर 30 रुपए दिया जाए, जब धान की पराली किसान के खेत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जलाई जाती है तो पूरे दिल्ली में हाहाकार मचता है। अगर लोगों को इस प्रदूषण से बचने, सुरक्षा मिलेगी वातावरण में, उसके लिए थोड़ा सा पैसा अगर ज्यादा देना पड़ेगा, लो कार्बन राइस के रूप में प्रिंटिंग हो, उसके लिए पैसा ज्यादा मिले और वो पैसा किसान के पास जाए, तो रिजनरेटिव एग्रीकल्चर अपने आप आगे बढ़ेगा। बहुत सारे व्यवसाय हैं जो कि प्रदूषण करते हैं, लेकिन वो अपना प्रदूषण, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं कर सकते हैं। हवाई जहाज अगर उड़ेगा तो उसका प्रदूषण होगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर बनाएगी तो प्रदूषण होगा, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जो अपना उत्पाद करेंगी उसमें प्रदूषण होगा। तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट करने के लिए, कम करने के लिए किसानों के द्वारा उत्पादित कार्बन क्रेडिट को खरीद सकते हैं। यह एक अपार संभावना है। अलग अलग मत है इसके ऊपर, एक मत्ता नहीं बनती है। हमें भी ये चीज समझने में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का लगा, जब लोगों से, अलग अलग स्टेक होल्डर्स में बात कर रहा था। तो इसको आगे बढ़ाना है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जो अध्ययन अभी तक अलग अलग क्षेत्रों में किए गए हैं, कि आगे आने वाले दिनों में धान और गेहूं के निर्यात से जितना हमको पैसा मिलता है, उससे ज्यादा पैसा शायद कार्बन के निर्यात से मिलेगा, अगर हम रिजनरेटिव एग्रीकल्चर का प्रयोग करते हैं। तो ये एक अपार संभावना है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रिसीजन फार्मिंग, इस क्षेत्र में भी संस्थान काफी काम कर रहा है। ड्रोन का प्रयोग मात्र दवा छिड़काव के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए ड्रोन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे ड्रोन के ऊपर सेंसर लगा करके आप अपने खेत के ऊपर उड़ाइए, 8 मिनट के अंदर 1 एकड़ में घूम करके ड्रोन आएगा, बताएगा किस जगह पर, जैसे धान का खेत है, ब्राउन प्लांट हापर या तेला चेपा लगा हुआ है, फला जगह से इसकी शुरुआत हो रही है। अगली बार ड्रोन उड़ेगा अपनी टंकी में वही मेमोरी लेकर के जाकर के उसका नोजल सिर्फ वहीं पे खुलेगा जहां पे की चेपा लगा हुआ है, छिड़काव वहीं पे होगा, बाकी खेत में छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से, सही दवा का प्रयोग करके जो हम अवशेष हैं दवाओं के, प्रदूषण है दवाओं के द्वारा, उसको हम कर सकते हैं। और प्रिसीजन फार्मिंग के द्वारा हम किसान बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हम लोग अपने संस्थान में ड्रोन के द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड किस प्रकार से बनाए, जैसा कि आप जानते हैं हमारी आवश्यकता बहुत ज्यादा है सॉइल हेल्थ कार्ड की। अभी हमारी यूनिट जो है वो 4 हेक्टेयर पे एक कार्ड बन रहा है, लेकिन हम जानते हैं जब हम साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमारा जो स्टेज है, इसकी साइज का भी अगर खेत होगा, तो इस खेत में अगर कहीं जमीन पे अच्छी है, कहीं जमीन थोड़ी सी खराब है, तो उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में 4 हेक्टेयर का मानक किसी भी रूप से साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में काम नहीं आ सकता है। उसको हमें और छोटे स्तर पर लाना होगा, और उसके लिए हमें ये अपनी क्षमता जो है बढ़ानी पड़ेगी, जो सॉइल हेल्थ कार्ड हम बना रहे हैं। और उसमें ड्रोन के द्वारा और सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि सॉइल हेल्थ के सारे 14 के 14 पैरामीटर जो हम वेट लैब केमिस्ट्री के द्वारा करते हैं, मिट्टी का नमूना ले आकर के लैब में टेस्ट करते हैं, उसको हम ड्रोन या सैटेलाइट के माध्यम से तैयार कर सकें, तो हर खेत का बहुत ही प्रिसाइज मैप तैयार होगा। इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और इस तरह से संस्थान के द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस की स्थापना की गई है, जिसमें जितने रिजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको किसानों के यहाँ ले जाकर के हम लोगों ने स्थापित किया है। वाटर हार्वेस्टिंग से लेके, प्रिसीजन एग्रीकल्चर से लेके, लेजर लेबलिंग, सारी चीजें। और उसी तरह से एग्री न्यूट्री स्मार्ट विलेज बागपत में और सोनीपत में हम लोगों ने 8 गांवों में करीब करीब 10,000 महिलाओं के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। उन महिलाओं को जाकर के गांव में जो बायो फोर्टिफाइड फसलें हैं, उनकी जो पोषक तत्वों का क्या फायदा है उनको खाने से, उनको शिक्षित करना इसके बारे में। सबसे बड़ी समस्या एक तो पोषक पौष्टिक अनाजों की उपलब्धि एक तरफ समस्या है, दूसरी तरफ पोषक तत्वों के बारे में जानकारी न होना, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और ये लिटरेसी जो है वो पढ़े लिखे लोगों, हमारी कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डायबिटिक है, तो पहली चीज डॉक्टर लिखता है, कभी नहीं आता है कि हम कितने कैलोरी ले रहे हैं। तो हम पढ़ लिख करके भी अनपढ़ है जहां तक न्यूट्रिशन की बात है। हमको सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन इसके बाद एक बारे में सब्जियों का पैकेट हम लोगों ने दे करके इन सारे गाँवों में, तो ये सभी महिलाएं अपना घर पे सब्जी उगाती हैं, उसका प्रयोग अपने किचन में करती हैं और इससे और लोगों को प्रेरित करती हैं। तीसरा बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं
उसमें हमारा एक कार्यक्रम कृषक सहभागिता बीज उत्पादन हमारा जो है पूसा संस्थान की किस्मों का रकबा है। तो इसका बीज उत्पादन हम अपने संस्थान में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने कृषक सहभागिता बीज उत्पादन का कार्यक्रम 120 किलोमीटर क्षेत्र में दिल्ली के चारों तरफ बीज उत्पादन में किया। किसानों को फायदा क्या है इसका? जिस रेट पर हम बीज देते हैं किसानों को, अगर 100 रुपए किलो बीज हम दे रहे हैं किसानों को, तो उसका 65 रुपए जो है 100 रुपए पे। Thank you, sir. I'll request Brent Chisholm, board member, Grameen Foundation, to please felicitate our guest. Thank you so much, Dr. Singh. Please give him a huge round of applause. It is our constant endeavor to drive curiosity, innovation, and collaboration to solve challenges. To elaborate on Grameen Foundation's global vision on agriculture, I now invite Gigi Finance and the development sector. Gigi, over to you to take us through Grameen's work and vision in the domain of agriculture. I hope you can see me. Good morning, everyone. I'm a little bit short, so podiums are always. And to thank you for your invaluable partnership, support, and interest in the Grameen Foundation and the work of the Grameen Foundation. We believe that women in low-income countries around the world exhibit extraordinary 10 years, including India, of course. As you have seen in the video, Mandy is an example of how we see this as happening. But this is only the start. Through the intersection of interventions, activities, dialogues, and enabling technology that focus on increasing productivity, profitability, and resilience, we will strengthen participation in football. Men's engagement and support are very critical in the system's change and the social changes that we are all seeking. So let's work together to close the gender gaps that block access to agriculture solutions by teaming together, and those that can offer solutions to decrease the burden of women in agriculture. A topic that is really very close to my heart. The burden of women in agriculture will only be exacerbated by climate change, and is oftentimes an overlooked area in our effort to address complex issues. Thank you, Dr. Singh. You have spoken about this extensively, and yes, I can pick up Hindi. All about economics. Let's move on to growth with development. This is what you are looking at in that slide. It's about behavior change on every level that will transform financial inclusion gaps, reducing the digital power of women to stand up. See? Okay. Thank you. We need each and every one of you to join us in this journey. to conduct this investment power. Thank you for your attention. All I can say is the coffee will happen, but on gender inclusive value chains in agriculture. Women in agriculture in India constitute nearly 70% share. They're invisible and absent, especially in the post-harvest value chains. The panel, moderated by Mr. Raj Shekhar, consultant World Bank, will take us through the many barriers faced by women in participating in the agricultural value chains and the viability and strategies tailored towards enhancing their participation. Mr. Shekhar, can we have you on stage, please? Mr. Shekhar is a seasoned professional with a strong background. Round of applause for Mr. Shekhar.
Joining him on stage are our esteemed panelists, Suryamani Rao, Director, Global Agri-Systems. Mr. Rao, can we have you and practitioner with over 3.5 decades of experience in building livelihood strategy, leading agriculture and agri-value chain initiatives, entrepreneurship, enterprise, and FPO promotion. Our next panelist is Mr. Saroj Kumar Mahapatra, Executive Director, Pradhan. With more than 27 years of experience of working with multi-stakeholder networks, Mr. Mahapatra has extensively worked with marginalized communities with a participatory approach. Our next panelist is Mr. Abhishek Joshi, Country Lead, Transforming Rural India Foundation, a senior supply chain and operations leader with over 19 years of experience. Mr. Joshi has been a pioneer in leading and delivering industry agnostic supply chain solutions. Our next panelist is Aarti Dayal, National Program Officer, UNDP India. Ms. Dayal has over 15 years of experience in the development sector, primarily in the sphere of development and program management. And our final panelist for the day is Neha Singh, Program Manager, Grameen Foundation, India. Neha has over 8 years of work experience in program management, business analysis, and knowledge management. Neha, can we please have you on stage? Before we begin, was undertaken by Grameen Foundation India in the 10 districts of eastern Uttar Pradesh to identify selected value chains in the market that have the potential for income generating activities to enhance women's economic opportunities. Today, we will be releasing the findings of this report and launching this report called the Value Chain Selection Study. I'll request our panelists to kindly launch this report, and can we please have the report on stage? The value chain selection study that aims to contribute to our combined efforts to visibilize women across the agri value chains. I'll request our panelists day marking this day. Oh, it's we have a recommendation here. Prabhat, can we please have you on stage? All right. Thank you so much to all our panelists. And now I hand over the mic to Mr. Shekhar to steer this very engaging discussion. Okay.
हर जगह नहीं। The advantage of carrot is it's storeable. It can be stored. गाजर को आप कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा दिन नहीं रख सकते, बट कैरेट जो हम साउथ इंडिया में भी खाते हैं, 1 महीना से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज में रह के फिर आता है मार्केट. So this gives you the chance to time the market and release the product. So this was one product which was chosen by the FPOs. So broadly you can see all the crops mentioned widely cultivated can engage with a large number of shareholders. Ample marketable surplus at every FPO level. जितने भी क्रॉप चुने हैं ample marketable surplus है. That means the engagement can begin immediately. कई करते हैं प्रोडक्शन को बने में ही हमारा 3-4 साल लग जाता है. यहाँ what we and today I can see some people for brown rice, red rice, especially diabetics like me who want to eat this kind of rice. So even in paddy, there is a scope for further segmentation and identifying product lines. So that's what we have suggested here. Don't just depend on growing normal paddy in marketing. वो तो है ही. उसके अलावा specialized varieties को आप pockets में उगा के उसको मार्केट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. Organic rice and small scale processing. ओके. एंड जब पैडी पे आप काम करते हैं तो पैडी में मैकेनाइजेशन का बहुत जरूरी है, क्योंकि लेबर आसानी से नहीं मिलता और कॉस्ट ज्यादा है. लेबर आसानी से नहीं मिलता और कॉस्ट ज्यादा है. तो ऑटोमेटिकली आपको कस्टमाइज सेंटर्स का ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा. और हमारे 2-3 प्रोजेक्ट जहां हम काम कर रहे हैं उसमें विमेन ही चलाते हैं हमारे सारे कस्टमाइज सेंटर. तो इमीडिएटली टेल्स यू मैकेनाइजेशन यू कैन ब्रिंग इन women as both actors as well as managers. Able
setting up soil testing as an enterprise and involving women. This we have done successfully in Bihar, and this can be done in this project also. Okay. I'll skip some of this. Digital operating system is an important one, and again here already Mandi project is working with women to take digital extension, digital finance. So this is one area to empower. Okay. Now I'll just come to the last slide. Enhancing role of women and empowering them. We know women play a very big role in the value chain, but most of the work they do has drudgery and low mechanization. एंड उनका एज somebody said they're invisible, अदृश्य है, काम कर रहे हैं मगर वो कहीं भी सामने बिजनेस में नजर नहीं आते. इतने सारे जो सर्वे हमने किए एक भी वुमेन विलेज ट्रेडर नहीं मिले हमको, जबकि हम देखते हैं कि वुमेन कर सकते हैं ऐसा काम. कई एफपीओ में सीईओ बन के वो बहुत अच्छे काम कर रही है, मगर कहीं भी हमको मार्केट में वुमेन ट्रेडर्स नहीं मिले, वुमेन होलसेलर्स नहीं मिले. Okay. So what we suggested is first we must have a women first policy. That means पूरा ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जो भी आप काम करना चाहते हैं सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए कि इसमें वुमेन कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं. अगर इस तरह का हमारा ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशनली है, देन यू कैन थिंक ऑफ ब्रिंगिंग देम सिस्टमैटिकली. अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल सोशल बायसेस है, दे प्ले सच अ स्ट्रॉन्ग रोल, वी इग्नोर दिस. Three areas we suggested for enhancing women role and empowerment. One was mechanization, because आप देख सकते हैं कई जगह जहाँ women काम करती हैं, even in production and post harvest, there is a lot of manual work and lot of drudgery. तो इसमें आप mechanization कर सकते हैं. Second one area is skilling. जो काम ऑलरेडी कर रही है उनको अगर आप अच्छा स्किल उनको ट्रेनिंग देंगे, then their value is enhanced. And many of the areas they need skilling is digital finance, digital extension, polyhouse nurseries, expert grader, sorter, okay, packager. These are all areas where skilling can be done. The last one is, as somebody said in the morning, I think Dr. Dalwai said, we don't need only job seekers, we also need job creators. So women as entrepreneurs is a very big role in any value chain. And इसमें they can move through three steps. One, they can start as an actor where they are performing a role. Second, they can become managers, as we see in many FPOs. They can also become entrepreneurs and own the business and create jobs for others. So these were some of the things that the study recommended, and that study is there with many of you. You can take a look at it. Now, given this is what we recommended. Okay, what I would now request our panelists to focus on is, let us just look at women in value chain. And as my last slide says, skilling is a very, very important area for women. Okay. So what can be done in skilling is one area we would like Aarti to you to talk on. Second area which requires a lot of attention is how to use digital tools, platforms to deliver better women empowerment. I would request Abhishek to talk on that. Then Dr. Surimani Rol, he can talk on any subject. He has been in this value chain for a long, long time, and we know each other for a long time. So one area I've asked him to talk on is what is his experience in terms of from the field. When you try to involve women in value chains, obviously there is going to be a social push, and the men will feel neglected. So he has a whole concept of how to look at it in a more holistic manner. Somebody mentioned, I think Gigi mentioned, that even men have to participate in the value chain if you want the women to be more empowered. So Suleiman, you can talk on that. And uh, Sarojji, Works too long, works with civil organizations, works with researchers, he works careful. So one angle I thought, we want to really bring women from the involvement in value chains. What can the government do? What can civil organizations, what can FPOs do? On this, and lastly, Neha is, I'm talking on behalf of them. So let us hear from Sarojji, works too long, works with civil organizations, works with researchers, he works careful. So one angle I thought, we want to really bring women from the involvement in value chains. What can the government do? What can civil organizations, what can FPOs do? On this, and lastly, Neha is,
I'm talking on behalf of them. So let us hear from Lisa what money project is actually done to take the exam. Over to you. Please. Basically gives the whole program more legitimacy and it gives it more credibility. And these women are now helping the local collective, the enterprises. What we realized is that so there are and all women face it. So so we developed a curriculum which is a Bisaki curriculum, basically a business friend at the local level, which who can help women entrepreneurs, whether they're existing entrepreneurs or potential entrepreneurs, actually start or scale up their enterprises, but also very importantly, give them that sort of push, that psychosocial support that, when societal factors come in and they're unable to push through them, then that extra support, that external support is in Karnataka, Gujarat, and we have seen good results of this. And I don't want to take too much time, but just one more thing that I wanted to add is that, of course, I spoke about managing entrepreneurial training, but in addition to this, it is very, very essential for us to also work with the men in the rural areas, not only on value chains, but also on sensitizing them that initiating women to take on more market-facing roles or higher order roles in the value chains is beneficial for us to also work on the ecosystem. So that's the other area I want to talk about. And just last thing before I hand over is that and that as we all know probably, but sex disaggregated data is very, very essential for all of us in our programming so that we can take decisions based on areas which are lacking where there are gender gaps. So often we've seen, and I've seen in our own programs that often we, overlook this very basic fact that when we are collecting data from our programs, we don't disaggregate it by sex. So that's something that is also very important. Thank you very much. Thanks, Aditi. Yeah, Dr. Subramanian. Thanks. Am I audible? Am I audible? Yes, thank you. It's a very insightful study. But let me come to the facts. Three things that the session is combining: agriculture, value chain, and gender. I'll start with agriculture, and that also brings the things and connect to the presentation, where Mr. Rajshekhar presented 17 commodities, around 17 parameters, and selecting board. I have not gone through, but that brings one question I'll put to audience and all of us also. There are how many commodities are there in India? Agricultural commodities. Anyone is having any information about that? How many commodities? Anyone? I don't want to take too much time, but just one more thing that I wanted to add is that, of course, I spoke about managing entrepreneurial training, but in addition to this, it is very, very essential for us to also work with the men in the rural areas, not only on value chains, but also on sensitizing them that initiating women to take on more market-facing roles or higher order roles in the value chains is beneficial for the household, for the community. So that sort of training is also sensitization awareness is also very important. This is something that we often overlook because when we empower Couple of managerial things. One has to take a risk in this process, and the system is not also so tuned. I said an example. In PM Kisan, we get numbers. So many farmers are benefited. Tell me one, how many of them under women receiving the benefits? Is there any classification on that? This is something that we can bring a policy orientation. Coming to, because I have only 3 minutes, kind of slot. Coming to the policy paradigm, also actor, manager, entrepreneur, this is going to move here and there. But example of Reliance, they need below 2 kilos size. But our specifics are different. I deal with many corporates, their specifics are equally same. Farming as a business is the call of the day. And farming as a family business is going to really answer integrating gender in the value chain, because the value chain talks about not value. As we see, any agri commodity has a chain. What is the value? He talked about 17 commodities, 8 commodities selected. That is production figure. What is the value addition?
it will multiply in value 30 by LM multiply by 3. And if you look at processing, then it will add another 3. Important thing, if you like to integrate gender value distribution to my farming women community. With this, I think I'll conclude. Thanks. Thanks, Suremani. That was short and sweet. Abhishek ji, can you throw some light on digital, technologies and platforms? Yeah, thank you, Rajshekhar. So I'll just, as part of Transform Rural India Foundation, we are working directly with DNRL Ministry of Rural Development, where I'm directly responsible for incubating and scaling up efforts for 800 FPCs with 14 SRLMs across the country. So just sharing some experiences around that. Right from the inception of the project, when we were incubating these FPCs, I think the clear distinction which we made around digital technology was being digital and doing digital. Right. So more often than not, I think when we really approach, the FPCs, and since we are promoting women-only FPOs, I think the gender inclusiveness is pretty much given as a foundation for us, because all 800 FPCs which we are promoting on behalf of Ministry of Rural Development, they are women-only FPOs. But in terms of the digital, I think it's been given that the technologies have to be embedded. Now, where do you embed the technologies and what insights you would like to glean from them is the question. So when I say, typically we approach an FPC saying that since we have a digital proliferation of technologies around us, Android-based applications, we are developing a lot of programs around it in terms of not only business mapping like agro uh, tool, which you said, Rajshekhar, which you mentioned, agro extension, right? I mean, that is something which essentially allows you to not only business and process map it in terms of looking at how your business planning cycles are going to look like. But when it comes to operationalization of it, I think there is certain right from the pre-harvest, post-harvest, and certainly when we are, I think the entire audience here today, which is gathered, is looking at how value chain linkages can happen. But sometimes I, as a supply chain practitioner, would like to differentiate that we use commonly the term supply chain with value chain interchangeably, but they are very, very distinct disciplines in themselves. So I think what we need to focus on is how can we make the foundation of supply chains very stronger for FPCs. And that's where, we have decided, where I made the distinction when I started was that there is a distinction between doing digital and being digital. You can bring in a technology, but whether it is really helping you or whether it is helping the woman member farmers, given their socio background, the challenges around mainstreaming the gender into business activities, the patriarchal socioeconomic norms which probably bring them to a barrier where they are still not able to, conventionally, as we say, as a cliche, break the glass ceilings. I think those aspects can also be tackled. So very quickly, I think what I would just like to share from my experience to the panel is we brought down certain tools on 4 or 5 parameters. One is around whether the applications can be used. Something what Aarti also mentioned, they have brought up on, the capacity building aspects around with Project Disha, if I'm not wrong. Yeah, so that's there. So we have built in an interoperability platform. What we are saying is the DDs, as we call them, the SHG women members, should be in a situation to use own processes around in a very, very simple rudimentary way, with only one click permissible with a tick box along with it, so that it do not necessarily spend too much time on the application. The second is around the business accounting and the compliances part of it, what we call as tag and map their own processes around. Second is around the business accounting and the compliances part of it, what we call as Simply Khata, which we have now percolated across to all these 800 FPCs, where the simulation has been embedded. So essentially, a DD can put in the details, the BOD members, the and they can run simulations. If I go to this A market, will I be profitable or will I incur losses? If I go to regional tertiary markets, so on and so forth. So we have built in that simulation for them, so that that takes away the aspect of someone going and telling that hey, you're not profitable, you probably are losing money here. Effective management control is not happening. So pilots for building up. So we are leveraging a lot on the Ministry of Rural Development schemes in convergence with Manrega, where we are under Bhagya Lakshmi scheme. We are helping women members to with WDRA, where we are bringing e-negotiable warehouse receipts. So that probably also could be a takeaway to Grameen,
when they're working in Mandi, I unfortunately do not have much appreciation. I'll hope over the course of the day I'll do that. But e-negotiable warehouse receipts and warehouse depository receipts, where that takes away the timing to the market and also gives you a little bit of insights of that have to be given back as an empowerment to the FPOs themselves. More often than not, what we are seeing, and that's what we are trying, where they can do the, not getting too heavy into big data and analytics. I think what simply an FPO, if they can have a vision, a dashboard where they can get to see their own farming cycle and the plannings, and that can give them the insights. So Didi is well capable, I think. She's the smartest of the lot. Wherever we have women CEOs, I think they are far more stable FPOs rather than the men CEOs where they're mocking. And I've got no qualms in accepting that. So the DDs are pretty smart. I think they can see. So what we do as a forecasting business cycles, farming cycles across commodities, I think they can be very smart enough. So that insight is what we have provided to them, and that's really, really helping us to do the kind of visioning. And the involvement from our side of someone going and teaching them is fading away. So my simple sense is, please let's look at what is important for them, and please always make this distinction of doing digital or being digital. Thank you. Thanks, Abhishek. On that digital note, Sarojji, can I ask Neha to just share something on the digital thing that they're doing? Then we'll come to you to nicely wrap it up. Hello. First of all, thank you so much, everyone, for your insightful presentations and comments. We have a dedicated session on the database decision making to enable market access for farmers and also focusing on women. So, if we talk about both data and inclusivity of gender in the agri value chain. We have what Grameen has done with the support of Walmart Foundation is that we have created a full-fledged dashboards for farmer producer organizations, and these are live dashboards which have the data regarding farmer, field, and crop. And simultaneously, we have capacitated the FPOs to make use of these data surplus can be absorbed in the market. So it's caters towards the production, pre-production, production, and post-production stages as well. So this is about uh, Grameen's intervention in data, and it's a disaggregated data that we are capturing, and that's very important. And talking about RT's point, we have taken a lot of efforts in making research gender inclusive, and we use data which is gender disaggregated. And yes, let me talk some more pointers on the gender inclusivity aspects where Grameen has extensively worked with the support of our farmer producer organizations to improve the representation of women at the institutional level and in the agri value chains, but also their participation, active participation there. So this value chain assessment study was one of the manifestation of our efforts, along with the um, very famous ProVia study, project level women empowerment in agriculture index study, which we will talk in detail in the last panel session. Level institutions. One is the farmer producer organizations, and other is the self help groups. So we try to integrate these two community level institution and bring about structural level changes wherein the FPOs and SGs go into formal and informal understanding of identifying the scope of work and also um, set the payment conditions so that these women farmers are paid on a regular basis and on timely basis and regular basis, and this is how they have control over their income as well. So yeah, that is all about data and also how Grameen is working on the ground to improve the inclusivity of gender in value chains, agri value chains. Thank you. Thanks, Neha. Now that we have heard all the panelists, let's ask Saroj how this we can create an ecosystem to make this happen. Involve government, civil organizations, FPOs themselves. Over to you. Uh, thank you, Grameen Foundation, for giving us the opportunity to share and for organizing this national conclave on market access for smallholder farmers. Civil organizations, FPOs themselves. Over to you. Organizing this national conclave on
market access for smallholder farmers. And as far as Pradhan's experience is concerned, we always believe that we are one of the stakeholder in the entire ecosystem, and there are many stakeholders in the entire ecosystem. And for doing the large scale change, I think the multi-stakeholder partnership is very much the National Rural Livelihood Mission, where near about 80 million women have been organized into SSGs and village organizations and organizations around livelihoods in NRLM. And also, there are lots of farmer producer organizations like 800 plus farmers producer organizations have been promoted by NRLM. And at the same time, there is a government of India scheme called this 10,000 FPO schemes, where we are one of the partners there. And I think if you go to the village, then if you ask mainly in the central India tribal region where we are focusing, if you ask a woman like, who are you? Then she generally tell us like, I am a farm laborer. So how to change that mindset from a farm laborer to the woman identity as farmer? So I think that is the first step. And for that, I think that NRLM is giving us a very good platform where lots of training, capacity building, and then woman identity as the farmer and the mental model changed and the changing the mindset of the people and the sense of agency of the collective and women, that is very much important. And for that, NRLM is giving that platform. And then women as a farmer to women as a producer, I think that again requires a very intensive uh, engagement around the production, productivity frontier, and the values and investment. So the producer groups are promoted at the village level, and the village organizations and there is a convergence between this producer group and village organizations. Then that will be a win-win situation, and that is the way forward to include the women farmer, and they can be a producer actually. And last time when I visited some of the villages of Jharkhand and Chhattisgarh, then the women told me that what is their identity. When I asked, they told that we are entrepreneur actually. So from starting from a farm laborer to a woman identity as a farmer, then farmer to producer, and producer to entrepreneur. So that is the journey actually. Local area economy and the investment in the resources, investment in the capacity building is very much required. And we generally our approach is like, our experience is that learning is that whenever there is a multi-stakeholder orchestration at the grassroots level and at the state level, at the block level, at the panchayat level, then the changes are happening at a very large scale. So that convergence, the partnership between the CSOs, the state government, the panchayat, CVOs, the community-based organizations, mainly in the SSGs and the FPOs, and the donor agencies. I think these are very much important. So, and they are the very important player in the entire ecosystem. Many times we do partner with the funding agencies and we do partner with the state government, but the CVOs are very much important. The community-based organizations in terms of SSGs, the village organizations, the cluster level federations, the producer groups, and in Odisha we are partnering with the state government around this agriculture production clusters development program. There we are promoting large scale agri entrepreneurs actually, women agri entrepreneurs. Again, the specific focus is on women. So that is our experience. And at the same time, I think the technology that already many of us shared actually, the technology, the working capital, finances, and the sense of agency of the collectives, those are very important pillars in the entire stories of change actually. And at the same time, I think if you see the production cluster type of approach, this and the panchayat, they can be, I mean, panchayat CVO collaboration could be one of the very good approach where APOs can be promoted. And the ultimate objective should be like the gender responsive organization of women, the gender responsive, the economic collectives of women, where we can focus on the transforming the lives of poor and marginal women farmers. So that is our experience. And thanks for giving us the opportunity to say. Would Yeah, you like to add the market players in the multi-stakeholder platform? definitely, definitely. Basically, the FPOs, if they can be linked with the markets and at the same time the startups
then that would add more value actually. So in our agri entrepreneurship program, we are doing that. Yes, to each and every of the panelists. Thanks to the audience. Just one point to conclude. What I gather from this is including gender in value chain means you require a social change. And not only is it a social change, as we mentioned, moving women from thinking of herself as a labor or actor to becoming the entrepreneur or the owner of the process is an intensely personal change. So unless these two go hand in hand, we are not going to get the change we want. The last point I want to leave is whenever we look at value chains and women, we tend to focus on the production part. And as I mentioned, our study showed not a single trader was there who was handling that 900 crores of business. So I think that is also one place, as you mentioned, to include market players and look for specific role for women in marketing, trading, storing, logistics. Thank you very much, and thanks to the organizers. Apologies for the delay. I'll request the panelists to please be seated to add to this discussion and to hear from a representative on ground. We have amongst us Mr. Ram Sahai Singh, Director, Mirzapur Jai Urja FPC. मिस्टर सिंह हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने अनुभव से हमें संक्षिप्त में इस डिस्कशन इस विषय और बताएं. Can we please have a huge round of applause for Mr. Singh? इस कार्यक्रम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आईसीआर के वाइस चांसलर और ड्राइवर फाउंडेशन के सभी हमारे जो स्टाफ और इस तरह और हमारे जो चीफ गेस्ट के रूप में जो मंच पे बैठे हैं और हमारे किसान भाई जो एफपीओ से विभिन्न एफपीओ से आए हुए हैं, अन्य डिपार्टमेंट से जो हमारे सदस्य आए हुए हैं सबको, और जैसा कि अभी बताया कि एफपीओ से संबंधित था, हमने 2019 31 जनवरी 2019 में एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर में कल्टीवेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग किया था कुछ फार्मर को लेकर के अब 100 2020 और 21 में हमने शुरुआत कल्टीवेशन और वैल्यूएशन का थोड़ा सा स्टार्ट किया, जिसमें 2020 और हमने 2 आउटलेट बनाया, जिसमें एक हमने हमारे जो आसपास के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेबल्स का, हम उससे भी कुछ वैल्यूएशन कराते हैं, जैसे हमारा आंवले का है, लौकी का है, सतावर है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली, इसका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो है वो हैंडीक्रॉप से रिलेटेड, जो बांस से हम रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें हमने पिछले वर्ष ग्रामीण फाउंडेशन से संबंधित को हमारे कुछ एफपीओ हैं, वंडर पाइप मैंने अपने सीएफसी से दिया था। थैंक्स। I'll like to request Induja Rai, Director, Institutional Relations, Grameen Foundation, India, to felicitate our panelists and Ramji. Ramji, आप please stage पे आइए. Please give them a huge round of applause. At that point in time to what it is today. And if I can draw parallels, I do see a similar metamorphosis or a similar path that the FPO world is taking from a development community mobilized, community owned initiative that the FPO has been predominantly before, I would say before 2017, 2019 to now a lot of entrepreneurial energy has moved into the into the FPOs. You have subcategories further genetically, and then dimension of access to finance, access to market, access to technology, access to information. We usually call
them as progressive farmers, the early adopters of technology? How do we harness them? How do we support them? How do we make them role models? Because you and I cannot do the farm. It's only our brothers and sisters here who are doing farming who can inspire other farmers to be able to do. And self-actualization dimension is, as a market, can we provide a safety net? Should any of the four needs fail for whatever reason, is a safety net that can protect the fall and not be able to also understand the dimension of the hierarchy of needs of the entire farmer. And when you juxtapose this broken market, the fact is the minor details which we really need to do this one. The third P which comes about the process. Reaching them itself is difficult. Now with the many NGOs coming and FPO is growing in every area of the country, I find that the financial institution will be able to reach. But I must agree that still, and I can tell you this, the access to finance and access no, availability of the financial institutions which can provide मेरे FPO को लोन नहीं मिला है. Genuine inability of FPOs to absorb capital that is constraining, increasing the credit. Benefit of looking at the space from multiple vantage points. What are your thoughts on the topic? Thank you, everyone, and thanks for coming. Thanks, Rami. Um, my initial, say, for example, micro insurance. Now, micro NBFC banks, they need to be aware. They need to be at the same time. हमारा एक important है कि that the user, they are not aware at all about that. कि कौन सा product उनके लिए है. of this HT panel didn't make so to a T20 from a test cricket, to repeat it. So are questions that you may have. Grateful for this opportunity. Thank you so much to all our panelists. We will have a voice from the field here. मैं आमंत्रित करना चाहूंगी त्रिभुवन नाथ पटेल, डायरेक्टर धारावत बायो एनर्जी फार्म डॉक्यूमेंट्स पे जो काम हुआ इसका रजनीकांत प्रसाद. And of course, to our moderator, Mr. Institute, smallest research professional with about a decade of dynamic stage, Mr. Prabhat Lal, CEO, Grameen Foundation India, Arabda Das, Director, Program Excellence, and Rajnikant Prasad, Project Director, Mandi. Please have the report and launch this report. Insights and actionable recommendations based on the. This project has been the amounts are more. I found the FPO business is the toughest, living up to the expectation. And one area which struck to us is the very high auditing cost. This is where the regulatory staff lakh turnover FPO. The 40,000 is the auditing cost. Then as the profit gone, who is taking away the profit? So there has to be some change over here. The biggest problems finance, in agri trade there are, or any trade, the two biggest problem is, one big problem is area for any particular activity is finance. This is like a spine that takes you through. For agri related trade, logistics is everything. Particularly the logistics has many shapes. We can discuss it later, but the moment you are going for, why most FPOs are into rice and wheat or vermicompost? Why not vegetables? If I buy vegetables at such a high price in the cities,
Why they are not producing? So there is a problem because it is all about logistics, apart from market preference and all those issues. And there is serious lack of low cost preservation and life enhancement logistics. What we have are basically big plans. I believe it is time to get out of the big plan scenario and get more into workable interventions. This is in fact, the Mandi project suffered while they tried to send consignment. And later I went and cross-checked the market, insurance market. They are highly overpriced. So if you are given a thin trade margin and on that someone takes away your profit for the sake of insurance, then your insurance becomes ineffective. And this is exactly why the transport sector has developed a system called cross-docking. But once again, that cross-docking system of time-bound delivery comes against a cost. So we have come up to this. These are our recommendations. Yeah. So thanks so much for outlining that. I think one area that I could clearly see in the report, and I think there's a lot of discussion that happened in the previous panel also, the financial capacity building, especially around bookkeeping, around the multiple practices that these institutions, FPOs do. And Rajnikant mentioned about the quality of bookkeeping. So help us understand what importance it holds in the overall uh, scenario of access to finance, access to adequate and timely finance. So enlighten us about that. So as I said, that the toolkit of either side has to match. Now there is a demand side problem, there is a supply side problem. Let us deal with the demand side, and the supply side must match with that. You can't expect an FPO to operate in the same manner, for example, a tire company does or an auto company does. So there has to be differences. Now, unfortunately, this is an evolving sector, so I understand there is a lot of room for the supply side to come into terms with that. For example, your working capital finance is, the most products in the available in the market are 4 month finance. I was talking to someone, he said that you can make money on seeds if you get a 6 month finance. I don't know which one is true or there is a reason why they made it 4 months. This is one. It's working. Okay. So on the demand side, the government has told, government told that how much salary you can give to your accountant and this. What the government hasn't said is that whether there are such resources in the on ground. So here is one problem is that instead of finding fault with FPOs, we have to see where they really lack the resources. Where are the skilled resources are available? We know Mandi worked in East UP. Now in East UP is a migration zone, so the best resources are definitely available somewhere else. So here is a one capacity problem that has to be addressed. That training of people, and secondly, the last part is the cash affinity. Now, here I believe there is a scope instead of we telling them. In fact, they have examples within themselves. So, a couple of case studies did. One of them we found is going 90% doing 90% transaction on cashless mode. And the day we met these guys, they just dropped a deal of good deal in their of 72 quintal wheat because the farmer was not agreeable to take it through
he was asking for cash. I find such good practices, and why it is necessary, because ultimately what is happening is they are presenting a huge balance sheet of, say, for them, 1 crore or 1.5 crore, and you don't have the financial finance trail, which is a very important in the finance parlance. In their toolkit, it is very important that to know that where from the money is coming and where it is going. This is exactly where. Now, having done so I have a question for you. Yep. See, we are so far talking about, I mean, we said about FPO networking, if that can help them, because scaling is indispensable. You have to scale up. Correct. So FPO network, we said that where the FPOs, by sacrificing some margin, are procuring from another FPO, bigger FPO, smaller FPO. And uh, what is your idea about it? And how can this scale be enhanced? How can the Sure. operation be enhanced? I think okay. Yeah. So continuing on the capacity building, and also means the aggregation. How do you further strengthen the aggregation, which is the core concept behind FPO? And I think our previous panel also kind of discussed that. So our learnings also under the Mandi project is quite resonating with the fact that there is a further need to enhance and strengthen the overall aggregator model. So by aggregating the aggregators and identifying FPOs really doing well in terms of their linkages, in terms of their existing capacities, in terms of their overall functioning, governance, and then utilize that model to develop a or adopt a market-based approach which kind of addresses the other smaller FPOs also. So in that sense, the whole idea of aggregating the FPOs, giving them the economies of scale that Professor Neeraj also talked about, that why there is a need of economies of scale in the business. So that's a really crucial bit, and probably something which has emerged out of our learnings under the Mandi program, that we need to identify FPOs which are doing well, which and further strengthen them so that they can cater to the overall FPO ecosystem. When you are going for aggregation, we often think it is on the sales side, that is the front end. The point is, I find a bigger issue with the at the back end. So one FPO is exporting vegetables. Mhm. It is based out of Varanasi. It is doing fantastic. It's good. Varanasi has an airport. I mean, leave aside other problems. There are problems. The point is, what is the catchment area from where he will be procuring this? Because across the region, what I found, and for a reason, is vegetable. It is not really a vegetable growing area. There hasn't been much diversification. So, which means that the production is scattered. Now, how will you bring it? Everyone knows that from harvesting, it's 6 hours of life. So, the solution lies in life enhancement, reducing the spoilage. Now, here, what there is a cold storage near in Varanasi for where they keep things. It is almost unutilized because once again, as I said, that the big plans are not going to succeed here. So, lot of I found lot of is very important, but in UP, my ground experience. In Maharashtra, I find a lot of startups are working for life enhancement, very low cost solutions at increasing for preserving vegetables,
for a few days at the village level, and the cool boxes for easy solution. If you think in terms of reefer vehicles, one reefer vehicle costs from uh, Varanasi to say JNPT or any place, it will cost you minimum 2 lakh rupees, and that's on the lower side because it doesn't have any return cargo. So who we need, I think, some low cost, innovative, disruptive solutions on ground which are easy to replicate. And instead of putting all our money into some big assets, which for which there is a serious demand from some areas, so I think that will help your aggregation side. Absolutely. Means I think in your report also you mentioned about some of those no cost-effective solutions, especially around addressing the logistic issues that we are discussing. So yeah, I totally agree with you on that, and that's one of the I think core fundamentals that need to be addressed before we really go big on aggregation of these views also to take up to the next level. You see, another area where there is a gap. You see, I know it's not very clear to me. The gender mainstreaming has happened in terms of in quantitative terms. If we see at the participation, at membership participation, if we see at board level participation. Now the issue is business survives on availability of resources, so which includes human resources. So how to convert it into quality assets, right? And it is very required because we are saying that we are working in the villages which are resource poor in terms of skills, these business skills. So what is your idea? I think, don't you think that a lot of intervention is required there? No, absolutely. And then just to help you with some statistics around the gender mainstreaming bit. So the overall participation in the FPOs at the membership level and at the leadership level saw a lot of increase. Means almost women members got doubled. Almost all of the FPOs had women in the leadership position, and almost half of them had more than two women in the leadership position. So that's a significant shift from what we had started with. So the point you are making that there has been some shifts on the participation level, but at the next level, how do we really enhance the engagement, women engagement? And that is where also we see there is a lot of opportunities that are still lying. So just to give you a statistics, absolutely. Because I saw in one of your reports, if I remember correctly, that I mean, which is a fact, say the smartphone accessibility of women is lesser than men, right? Now, if they don't have smartphones, how are they accessing the apps that you have developed? So, and if they are not using the apps, how can they improve that skill? And that skill is very required in business based business decisions, database business decisions. So women are here. I am looking at women not in terms of gender. I am looking at it from the perspective that if there are say five skilled person, because in the end business enterprise entrepreneurship is not easy to find in India. I mean, at least the data says so, our whatever we did on economic front. So if that be the case, then there has to be more and more people joining the trade, skilled resources. So some intervention, if required, is to push him or her into that area. Yeah. So some of the learnings that emerged out from the Armandi programming is before you get into capacity building, you also need to work on the social and the gender norms that exist within the society and within the household. So a lot of programming that was directed towards community and the household level gender dialogues, which kind of enhances women's voice and their bargaining power within the household. And at the next level, you start looking on their capacities, enhance their capacities, enhance their access. So, and that is, I think, a great learning that has emerged from Monday is around how successful these gender and the community dialogues have been at the community level as well as the household level, because that allowed probably the increase in the women's participation at the FPO level. Now, coming to the next point that you're making about how do you go ahead and enhance the capacity and enhance their engagement within these FPOs. So on that also we have some significant learnings emerging out.
One being there is a lot of women-friendly practices, women-friendly livelihood opportunities that these FPOs have promoted or engaged in. Let's say vermicomposting, let's say a lot of processing, packaging, sorting, grading sort of activities. And therein there is a lot of engagement and the opportunities that have emerged out for the women. And this also takes from the fact that a lot of women's skills, their existing skills are utilized in these activities. So, but I completely concur with the thought that this is a starting point, and from herein we further enhance their capacities, engage them in a much better way, and there's a lot of scope of improvement there in that way. You know, it's the every minute we save is actually, we will earn some blessings probably. So I would like to touch upon the last point, which came to my mind. The FPO is created with a mixture of two improbables, two extremes. One is cooperative, which is the complete socialistic thought. The other one is market, which is a pure capitalist animal. Now, the problem here is you have companies, I tried referring them as community enterprises, social, I can't say social enterprise, I mean, let's say community startups. It has to have a startup aspiration in itself. Here comes the problem. As per law, you are putting people on board. Now, I have to assume that the people on board are responsible for the decisions. If they are responsible for the decisions, and I'm using my brain is my capital, what will I get in return? Some charges for my mobile. The directors here, they spend their whole day in, and in the end, yes, I know how they can be paid something more. But don't you think it's a serious problem with the system that where there should be a reward system for a good entrepreneur? I'm considering a director as an entrepreneur. Yeah. So I think you have brought up a very fair point, as in how does this overall ecosystem also becomes lucrative and attracts talent that and also nurtures them in terms of providing them enough opportunities, incentivizing their engagement. I'm trying to think in very simple terms. I'm a great believer of market. Okay. So I'm being very simple here. कुछ लेना देना तो चाहिए. Something has to be there for which he should do. He should do more. He should excel. He should bring better returns to the system. Sure. Means I'm sure this is a food for thought for all of us also. That how do we develop an ecosystem which really makes sure that everybody, and especially who are leading this show, are incentivized well. Then flourish with the overall ecosystem as well. So with these thought, it, sure. Thank you very much. With this, we save 2 minutes for you. Thank you so much, and we apologize to our speakers and to the audience for the technical glitch. I think it's a humbling reminder that not everything can be in our control. I'd like to invite on stage Mr. Ravdadas, Director Program Excellence GFI, to kindly felicitate our speakers. And I'll also like to inform you all that the report is available at the stall on your right. Um, just one small thing that I missed before is that this report draws from the rigorous fieldwork of Mr. Bose and on the thorough research that has been done by Grameen's CII team. The report is available at the stall there. Aravda, could you please felicitate our speakers? Please give them a huge round of applause. This report is a powerhouse of Great information, insights, news.
We'll now break for lunch, which I hope is not the most awaited part of the day. For those who've not had the chance to visit the exhibitions yet, now would be a good time. See you back at this hall shortly. Lunch is served outside. Thank you. We'll request everyone to collect in this hall at 3 p.m. We'll start the next part of the day at 3 p.m. sharp. Something in my mind was telling me to run, telling me what we had. Something telling me to hold on. Don't break. So
the current context of expansion in technology. The gap between farmer expectations and market realities and the absence of adequate market intelligence is perhaps one of the biggest challenges that farmers as well as FPOs face, something that we've also discussed so far. Our next panel is on enabling market access for FPOs and smallholder farmers through data-based solutions. The panel will discuss the importance of capacitating FPOs to bridge the demand and supply gaps of agri-produce through the selection of appropriate technologies. The panel will be moderated by Krishnan Palasana, Country Director, Digital Green India. Sir, can we have you on stage? Mr. Krishnan comes with more than 25 years of experience in sustainable development sectors ranging from climate resilience to women's empowerment. Joining him on stage are Mr. Nishant Gupta, Social and Environment Impact Advisor, Walmart Foundation. Mr. Gupta has over 15 years of experience. Our next panelist, Mr. Shubhendu Dash, Vice President, Access Development Services. He comes with 22 years of overall experience in value chain development. Our next panelist is Mr. Alex Angera, co-founder and CEO of Farm, a company that has been built with the vision to promote scalable tech solutions to serve farming communities in India. Next panelist is Mr. Yogesh Tiwari, Head IRI Education, that is International Rights Research Institute. Apologies for that, I'm repeating this once again. International Rights Research Institute. Mr. Yogesh has been at the forefront of imparting education and capacity development programs in various disciplines of rights science and technology. Our final panelist today is Mr. Alok Pradhan, Head Basics Farmers Market. He comes with 20 years of experience of working with banking institutions. Welcome, sir. And with this, I hand over the mic to Mr. Kush to take us through this discussion. Over to you. Good afternoon, everyone. Indeed, it's such a pleasure to be in this office today. Congratulations to Kami for organizing this. Strong participation in one of the great discourse that we had pre-lunch. And I mean, the previous session was brave enough to start up with lines of video. I'm not going to do that. Apologies for that. As it was said, this panel will focus on the importance of data in database solutions to enhance access to markets for farmers and farmers organizations. And what we are going to try to do is to draw the collective experience, the references, the perspective that this panel has, and perhaps contribute to a future course of action on how we need to collectively work towards building this data system. In Digital Green, having worked with about 4.5 million farmers and hundreds of farmer producer organizations, we have drawn some critical lessons, and that echoes with some of the lessons that we have learned in the sector so far. And typically, we try to apply this 4A rule when it comes to data and technology. One is, the first A is awareness, the second A is accessibility, the third A is availability, and the fourth A is affordability. And while we think about that, based on this collective experience that we have, I want to put forward 2-3 points as a prelude to this discussion and also to kickstart the dialogue that we are going to have. Number one, that there are huge efforts that are happening right now in the digital ecosystem. We are all aware of that. Newer and better technologies are being introduced and being adopted through agtech, agbusiness, fintech companies. However, it seems that everyone is trying to do everything. Rather, is there a way that we can actually join hands, join our strengths together, and create alliances to force this and drive this effort forward? How can we do this? The second is
with this digital ecosystem, there is also a current trend to treat farmers and the farming community as the mere consumers or the customers of our products and services. However, we know that the growth, scale, and sustainability can happen only if those farmers and farmers' organization becomes critical partners in this process rather than mere customers and clients of the service. And in this digital ecosystem that we are talking about, we know that data is the foundation upon which this ecosystem is built. In our case, it's the data of farmers. And important enough, data is that one asset that the farmers have, but they don't even realize the importance of that. And this data can be invested into the ecosystem by farmers themselves so that they can become key partners in this whole process. How do we ensure that the farmers have ownership and control of their own data? And by using that, they not just become mere recipients of the services, but active owners of this ecosystem itself. So that's the second point. The third point is to help this system thrive and sustain, there is a need to build, and we all are aware of that. That's what we discussed in the earlier sessions also. Data capacities and digital capabilities of both farmers and the farmers' collectives. How can we ensure data literacy among farmers and then digital savviness in FPOs so that they can grow into sustainable institutions that creates or that transforms the agriculture system itself in this world. So that's some of the 2 or 3 points that I would like to put forward before we enter into this discussion. And we have a big panel here, like 6 of us, 5 panelists here. There's also a time constraint. We would like to finish this within the allotted time or even before that. So if you want to know about, the participants want to know about what these panelists are doing, what are their organizations are about, please go to their LinkedIn pages, go to their websites and see. And we will try and stick to the, the questions that we have and the solutions that this panel has for them. So I would request also the panel members to be as concise, short as possible, and have a solution-oriented approach to these problems. So I will start with Alex Sangira. Okay. Farmart is the B2B food supply platform that connects agri-retailers to farmers, and we have reached almost 60K retailers and close to 1.5 million farmers. In your experience, how is data enabling farmers to enhance their market experience and gain additional value? What kind of data is helpful to farmers to make these decisions? And what are the key data requirements for active actors like yours from the farm sector? Farmart as actually not an agri-tech or a tech company. We actually call ourselves a data company because fundamentally, what is broken in agriculture or food supply chain is, the data transparency or the data quality. And the way we think about it is we actually have an internal framework, just like all tech companies like to have this data framework, which we call ourselves as, three aspects of importance is basically we call it the ASISP. So I is for identity, farm identity, for focus. S is for source. So where it's more tailored towards the land, the geography, and P is for basically product, right? And capturing these three aspects of uh, our food supply chain is kind of critical and the heart of how we build our product and services. So for us, what we really focus on is, are we actually identifying the farmer who is actually tilling the farm? So for us, farmer is not the landowner; it's actually the person who has the decision-making rights for the land ownership. The second part is to basically uh, capture as much information on the source, which is either the land parcel or it's the soil content, or it's basically the irrigation access, or it's basically the level of uh, chemical or carbon, so, the chemical basically composition of the soil. So this is like this is the one of the most intense activities we do at Farmart. It's very hard to do it, but we do it from a very long term data standpoint. And the third is product, right? So product is what the farmer is growing, how what cycles are they growing at, and then eventually what are the market access
of that product in terms of a 30-kilometer radius, right? So that's what we capture in terms of framework. Now, if you talk about how it helps the farmer or it would help eventually the farmer, is what we believe is that if you could get the first and the second right, you can actually start to influence decision making on the product side. So what they're growing, when they're growing, the quality of the growth, which eventually leads to their income realization, and that's kind of the critical piece to this entire farm income generation standpoint. Simply because if I don't think so. Eventually, like maybe it's already happening. When I go to the field, we already see that information asymmetry in terms of pricing is almost negligible now. So if there's a farmer in any village, I feel they are far more aware of the pricing across the country, not only in their geography or the location. But what will actually make a difference in their life is two things. One is the information you provide to them in terms of the timing to market. So when they should hold, when they should sell, and do they have the initial financing available for actually some kind of holding of that commodities. And the second thing is, what they should grow at what times of the year, uh, based on local market geography as well as market access in terms of buyers to their location. So I think from a data standpoint, agriculture needs to be relooked at, just like the UPI revolution in terms of Aadhaar took place. I fundamentally believe that if you really want to digitize of this sector, uh, income generation will automatically happen simply because it's a data problem. It's actually not information asymmetry problem. It's actually a data problem that need to look at this whole market and needs to be relooked at. Thank you so much. Thank you so much. Just one additional question. When you have this data that comes from the farmers, does that data go back to the farmers so that they can take information? Yeah, so it's really interesting that today's farmer is very aware, actually, according to me. And the more data transparency you bring to the farmer, fundamentally what that changes is that it helps them build trust in your organization. And because if you're trying to traditionally, if you think of the whole sector for the last 100 years, right, everyone's made of money through actually holding back data, and that has actually led to a large level of trust deficit in the market. And organizations of the future, not only food and agriculture, but if you look at healthcare, education, textile, anywhere, the more transparent the organization is around accessing right information to the customer, the more trust gets built, and that's how basically repeat customers are eventually built in businesses. So I think from a farmer standpoint, if you want to really gain the level of trust, it is just not the physical touch point anymore. It's actually how honest are you with your data transparency to them that builds that initial trust very quickly for them. Thank you. Makes a lot of sense. Thank you for underlining the importance of data transparency. I would now move to Gopesh. Uh, Gopesh, in education, you are involved in imparting education and capacity enhancement to, to your partners in the global south in areas of rice science and technology. Based on your diverse and long experience of interacting with farmers and various institutions, what does data mean to a farmer or a farmer organization? How do they, or do they at all, use data for their own benefit? What is your recommendation for bridging the last mile data gap in farm sector in a diverse country like India? Thank you, Krishnan. Thank you so much. Let me attempt this question. I mean, in two way. मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करूं ताकि सबको समझ में आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे हमारे एफपीओ के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मुझे पता है आप लोग सब लोग ईरी में आ चुके हैं, बनारस में काफ़ी कुछ लोग आप लोगों की वो हो चुकी है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करूंगा। ईरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा ईरी के बारे में जो लोगों को नहीं पता है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग धान के फील्ड में काम करते हैं। और पिछले 60 सालों में जो हमने काम किया हुआ है उससे दुनिया के जो 50% धान आप लोग खाते हैं, चावल आप लोग खाते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी देन है। एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल है। और कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हम जैसी है, उसके लिए डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, क्योंकि पूरे वैल्यू चेन में जहां भी आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो प्री प्रोडक्शन में कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन में कर रहे हैं, चाहे पोस्ट प्रोडक्शन में कर रहे हैं, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या प्रोजेक्ट मोड में लेके जाते हैं, तो डाटा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिना उसके आप कुछ चीजें प्रूव नहीं कर सकते हैं, पब्लिश नहीं कर सकते हैं और सेटअप नहीं कर सकते हैं।
एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड डाटा बेस्ड एप्लीकेशन और बहुत सारे डाटा बेस्ड सॉल्यूशंस हमने डेवलप किए हुए हैं। शुरुआत से देखें, मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो किस एरिया में कौन सा राइस का ज्यादा डिमांड है, क्या क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ के लोगों का क्या पसंद है। कहीं लोग थोड़ा मोटा चावल खाना पसंद करते हैं, कहीं पतला खाना पसंद करते हैं, कहीं फ्रेग्रेंस खाना पड़ सकते हैं, कहीं वो जो स्टिकी होता है उसको खाना पसंद करते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन वहां से स्टार्ट करते हुए कि कहाँ क्या है, और उस हिसाब से फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के थ्रू हम कैसे अपने राइस को इम्प्रूव करें उस एरिया के लिए, चैलेंजेस को देखते हुए वहां से स्टार्ट करते हुए। और चाहे वो आप चले जाइए फिर सीड की अवेलेबिलिटी में, तो देयर इज सम एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इनटू द सीड कास्ट, ताकि वहां के लोकल मिक्स सीड कैसे अवेलेबल हो सकता है। राइस क्रॉप मैनेजर मेरे ख्याल से आप बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे, खासकर जो एफपीओ के लोग हैं वहां पे बनारस या उसके सेगमेंट में। तो आप न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिशन की चीजें कैसे आप देख पा रहे हैं, उसमें डाटा कैसे आप फीड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट है, मैकेनाइजेशन है, कोई भी आप एक वैल्यू चेन लीजिए, हर वैल्यू चेन पे कुछ ना कुछ एक एप्लीकेशन जो रिसर्च ड्रिवन है उसको हमने किया हुआ है एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा कंट्रीब्यूशन इस चीज में है। और बहुत सारा जो काम हम कर रहे हैं उसमें डाटा एक बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है, जहां तक मैं अपनी बात करूं, जो ग्रामीण फाउंडेशन ने ये वर्क स्टार्ट किया हुआ है उसमें जो लोकल बेस पे जो डाटा जनरेट हो रहा है, जो डाटा एप्लीकेशंस आ रहे हैं और जहां से आप उसमें फीड कर रहे हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है बड़े लेवल पे जाने के बाद। चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे आपका कौन सा सॉइल टाइप का हो, चाहे प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हो, या डिफरेंट टाइप की जो अदर एक्टिविटीज हैं, उसमें वो डाटा बहुत बड़ा रोल अपने आप में प्ले करेगा। बहुत सारे फ्रेगमेंटेड अप्रोचेस में एप्लीकेशंस और बाकी सब चीजें डेवलप्ड हैं, मार्केट में है। शायद हमारे इंडस्ट्री कलीग्स जो है लिंकेजेस और बाकी सब चीजों में काम कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। लेकिन एक चीज सबसे क्रुशियल है जो मुझे लगती है वो होना चाहिए, वो है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज एप्लीकेशंस इनटू वैल्यू चेन, जो कि कहीं ना कहीं अभी एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शायद हमारे पास भी वो चीज मिसिंग है कि वो पूरा पूरा जो हमारे पास लगभग कुछ 30-35 एप्लीकेशन है पूरे वैल्यू चेन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो। लेकिन फिर भी उन सभी का इंटीग्रेशन जो है, स्टार्टिंग विद प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन और थोड़ा वैल्यू चेन में जाने के बाद भी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने बड़ा फेमस कहावत सुना होगा कि डाटा इज अ न्यू ऑयल, मतलब आपका जो डाटा है वो आने वाले वक्त के लिए, जैसे तेल इतना ज्यादा कॉस्टली है, उसी तरह से डाटा जो है उसका आप उसके बेसिस पे बहुत तगड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। तो जो डाटा आपकी अवेलेबिलिटी है या जो आपका इंफॉर्मेशन है और बाकी सब चीजें हैं, उसकी जब तक पूरा सिस्टम में आपकी इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होगी, जब तक वो चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, वो शायद एक डिसीजन लेने में बहुत बड़ा इशू प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और आने वाले वक्त में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, बाकी सब चीजें चेंज हो रही हैं, उस उस कंटेक्स्ट में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि डिजिटल एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, डाटा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आप लोगों को एक एम्पावर करने में, हर डायरेक्शन में ले जाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और उस डायरेक्शन में मुझे लगता है हम जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे काम करती हैं, लेकिन बड़े लेवल पे ले जाने के लिए शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो organizations हैं, like digital greens and different type of organization, how they can take forward to the next level. I think that's a very, very important. So I'll just stop here. Thank you so much, Gopesh. You also underlined the importance of data as an empowerment tool, not just about asset or a transactional tool. Thank you so much for that. Nishant, uh, you are currently working with Walmart and you are now leading their social impact investments in India and with particular focus on FPOs and market access. What is your take on data-driven ecosystem and what is Walmart Foundation and Flipkart doing to build a robust and transparent data ecosystem for FPOs and farmers in India? And what are the opportunities that you see forward? सो इसको मैं 3 स्टेप्स में आंसर करूँगा। जो हम लोगों का ओवर व्यू है, जिस तरीके से हम डेटा, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, वो 3 लेवल पे आती है। एक तो फार्म और फार्मर लेवल पे आती है। अ, दूसरा फार्मर कलेक्टिव लेवल जो कि एफपीओज हैं उनके लेवल पे आती है, और तीसरा इकोसिस्टम के लेवल पे आती है।
तो कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जो फार्म लेवल पे या किसानों के लेवल पे जो हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, जैसे हमारे कुछ ग्रांटीज हैं, फॉर एग्जांपल प्रिसिजन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, वो बहुत ही एक फार्म लेवल के डायमेंशन पे वो एडवाइजरी आज के टाइम पे प्लान कर रहे हैं डिलीवर करने की, ताकि फार्मर को पता चले कि उनके फार्म में, जैसे सुबह भी कोई बोल रहे थे कि इतने बड़े फार्म में भी बहुत सारा डिफरेंस होता है कि कहीं की मिट्टी कैसी होती है, कहीं ऊंचाई होती है, कहीं नीचाई होती है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फार्मर को किस तरीके का डेटा उससे गैदर किया जाए और फिर वापस उसको इंसाइट्स और एडवाइजरी दी जाए। एक तरीके का हुआ जो कि एग्रीगेटेड लेवल पे हुआ, जो एफपीओ पे हुआ, एंड उसमें डिजिटल ग्रीन ने खुद ने बहुत अच्छा काम किया है, ग्रामीण ने बहुत अच्छा काम किया है, कि एफपीओ मैनेजमेंट में वो जो डेटा का यूटिलिटी है कि कौन किसान कब क्या बो रहे हैं, कब क्या उपज आने वाली है, किस क्वालिटी की उपज आने वाली है, उस चीज को यूज करके कैसे हम मार्केट प्लेयर्स के साथ लिंक कर पाएं, उस पे बहुत सारा काम होता है। और ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत ही लोकलाइज सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हर ज्योग्राफी की नीड अलग है, हर क्रॉप की नीड अलग है। एक वो रहा, और इससे आगे बढ़कर अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो अगेन मैं दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा कि एक रहा हमारा, जैसे टेक्नोसर्व काम कर रहा है ट्रेसेबिलिटी पे कॉफी फार्मर्स के साथ, ताकि जो ग्राहक आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए उनको पूरा ट्रेसेबिलिटी मिल जाए कि ये कौन से किसान से कहाँ खरीदा गया है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। उससे दाम बढ़ जाता है। दूसरा, उससे एक और ऊपर लेवल पे जाकर हम जो इकोसिस्टम जो इमेजिन कर रहे हैं, एक टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट ने एफपीओ डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पर देश के जितने भी एफपीओज हैं उन सब का इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है, तो ताकि कोई भी अगर देखना चाहे कि इस जगह पर कितने एफपीओज हैं, कौन से एफपीओज हैं एक्टिव हैं कि नहीं हैं, कितने मेंबर्स हैं, कौन सी खेती कर रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल रहेगा। ऐसा डैशबोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मार्केट एक्सेस प्लेयर्स के लिए, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो इस तरीके से हम 3 लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ताकि वो पूरा एंड टू एंड डेटा बैक्ड सिस्टम्स से डेवलपमेंट हो सके। Thank you so much. That was interesting. And we also learned about how it can actually play a role in building those which can be adopted and scaled up by the market in the days to come. Uh, Shubhendu, I'm moving on to you right now. You have been working very closely with FPOs in India across the value chain to make FPOs grow and sustain for themselves. One key area on this has been uh, convergence with the government and public systems. What is the role that the government can play in creating an enabling data system for farm sector, particularly FPOs in India? And what are the opportunities that are available in harnessing public data systems? And what are the challenges that you have seen? Hello. Yeah. So, Krishnan, let us first discuss the challenges and what are available so that we can derive कि क्या चीजें अवेलेबल है एंड कहाँ पे जा सकते हैं हम लोग। सो जैसे गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी एंड उनका इनिशिएटिव है यूपीआई, हमने देखा बहुत बढ़िया सक्सेस हुआ है। बहुत सारे अदर जो अगर हमको दिक्कत आती है, किसान रथ एक एप्लीकेशन है, तो फार्मर्स कितना यूज कर रहे हैं। अभी ओएनडीसी आया है, ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि किसानों की जो प्रोड्यूस है, मतलब कोई भी प्रोड्यूस अपना बेच सकता है मार्केट में, यूनिफाइड मार्केट है, तो अपना जो भी के वो एक बेच सकता है। तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं। हाउएवर बहुत सारे जो फार्मर्स हैं एंड एफपीओ पर्टिकुलरली ये सारे सपोर्ट सर्विसेज आज की डेट में भी ले नहीं पा रहे हैं। एंड क्यों ले नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें फार्मर्स के पास में पहुंचने में अभी भी टाइम है। मेरे मोबाइल पे लोड करता हूँ, वो इतना सारा डेटा मांगता है, तो मैं उसमें पहले सोचता हूँ कि मैं भरूँ नहीं भरूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ। अब हम फार्मर से अगर ये उम्मीद करें कि सारे के सारे डेटा भरें, तो वो एक चैलेंज है। जो हम आज की डेट में गवर्नमेंट के साथ में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की जो 10,000 एफपीओ प्रोग्राम है, उसमें एक कमेटी बनी है, 5 कमेटी है, 5 कमेटी है, जिसमें कि एक है
मतलब सपोर्टिंग द एपीओ को सिस्टम, मैं उसमें एक मेंबर भी हूँ। उसमें जो आज की डेट में हम एक सबसे बड़ी जो चैलेंज एपीओ के लिए देखने के लिए आ रहे हैं, बिजनेस, मार्केट लिंकेज, डेटा कलेक्शन, ये सारे किससे बड़ी जो चैलेंज आ रही है वो बिजनेस अकाउंटिंग। टैली एक बहुत ही कॉमन बात करो, कोई जो मार्केट में जो कंपनी है मैक्सिमम कोई सीड में है, कोई फर्टिलाइजर में है, कोई पेस्टिसाइड में है, कोई कोई आउटपुट मार्केटिंग कर रहा है, बहुत कम कंपनी जैसे हैं जो कि इस चीज को एक साथ कर रहे हैं। जब एफपीओ की ऑपरेशन इतना कॉम्प्लेक्स है, तो जो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ऐसा एक कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए मार्केट में, जो कि टैली खाली क्या है कि अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक एफपीओ में इन खाद बीज जो दवाई जो सेंटर है मैं उस पर बैठा हूँ, मैं उसकी एफपीओ की जो चेयरमैन है डायरेक्टर हो सकता है कि वो हजार के हजार मेंबर को जानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ ना। कल को कोई अगर मेंबर आए तो जो डेटा की बात कर रहे हैं, एक तो है एक्सटर्नल डेटा, मतलब एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन कि जो कंपनीज को चाहिए, सरकार को चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन जो एफपीओ को चाहिए ताकि वो और भी ज्यादा प्रोडक्ट ले सके मेरे एफपीसी से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस जब एफपीसी का बिजनेस बढ़ गया, हम देख रहे हैं 10 लाख की भी एफपीसी हमारे साथ में है, 20 लाख की भी है, 50 लाख की भी है, एफपीसी के टर्नओवर बढ़ेंगे आज नहीं तो कल। जैसे ऐसा एफपीसी के टर्नओवर बढ़ेंगे आज नहीं तो कल, जैसे ऐसा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाना जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने लग जाते हैं। तो उसको मैनेज करना भी टैली हर कोई एक्सपर्ट होता नहीं है, तो ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज की डेट में जो सबसे बड़ी डिमांड है 10,000 एफपीओ स्कीम के अंदर, तो उसकी मेंबर का डेटाबेस भी वहीं पर हो। कोई प्रोडक्ट, जैसा आपने ट्रेसेबिलिटी की बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कल को सारे कंपनी जितने भी सोर्सिंग करेंगे सब पूछेंगे ये कहाँ से आया है, कौन सी खेत से आया है, क्या क्वालिटी है, कैसे आपने इसको लिया है, आपने कोई गलत प्रैक्टिस तो किया नहीं, ये कैसे आएगा। ये सारी चीजें अगर इंटीग्रेट करके कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बन सके, हमने कुछ एक तो आइडेंटिफाई किया भी है, हम उनके साथ में काम करने के ट्रायल भी कर रहे हैं, बट आज तक जितने भी मार्केट में है कहीं ना कहीं पर सब लोग डेवलपमेंट स्टेज में है। और जैसे टैली की जहाँ पे एफपीओ फेल होती है, एफपीओ का कोई भी बिजनेस है, अगर हम माल बेचते जा रहे हैं, पता नहीं कि पैसा आ रहा नहीं आ रहा, तो कल को एक्सपायरी हो रही है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सेल्फ में बड़े बड़े एक्सपायर हो जाते हैं, कैसे पता लगेगा कि एक्सपायर हो गए, नियर एक्सपायरी कौन सा आइटम है, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। एंड गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा सोच रही है। नबार्ड ने कुछ अपना, मतलब नबार्ड के लेवल पे उन्होंने कुछ 100-150 एफपीओ में ट्राई किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया, यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ, मैं जहां मेरे तक मेरी इन्फॉर्मेशन में आ रहा है, कुछ एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये सब चीजें इंटीग्रेशन करने में गवर्नमेंट का बहुत रोल है। एंड आई थिंक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री हमारे इस बारे में बहुत सोच भी रही है कि सारे प्लेटफॉर्म्स को बुला के कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकें, ओपन डेटा सोर्स सबके लिए अवेलेबल हो। ये एक बहुत बड़ी रोल मुझे देखने को मिल रहा है। Basics have pioneered financial inclusion among collectives, farmers' collectives, and have extensive experience of working with the farm organizations and cooperatives. Uh, when it comes to financial inclusion, much of your decisions also need a load of other data sources, right? The decision that you take in terms of credit decisions. What is your thinking around data exchange and data interoperability, particularly with other actors in the market, including, is it something that you are thinking about, this data interoperability? And what are the constraints and opportunities that you see in that regard? Thank you. So, Basics Farmers Market is a new initiative of the Basics Group, and it's been a year since we have started this initiative. We use a technology platform to onboard FPOs and FPO farmer members. And the idea behind this is to create a marketplace for all sorts of services that the FPOs would require, starting from input, output services, as well as credit. We are already active in the input and output trade space. We are also piloting a credit program probably in a few months' time. But what we also understand, like from the question you asked, yes, we are looking more at partnerships so that existing companies who are active in this space, both in the input as well as the output side, form part of this platform and not necessarily create a new model wherein Basics is doing everything. We want the FPOs to get empowered so that they can use the platform and do and take get these services in place. So the platform which we have today is mostly a phygital, you can say an assisted marketplace where we use our own executives
who have an app, who go to the FPOs with whom we are working and take the data, both in terms of what crops they're growing, what is the kind of area that they're having, etc. And then use this data so that the input suppliers as well as the output suppliers can start interacting with the FPOs and then execute the trades, both in the input side as well as the output side. Similarly, in credit, of course, we would not like to be an NBFC or a bank. What we want is to engage the FPOs so that they can enable credit for their own like FPO loans or for the farmer members, so that the entire cycle kind of gets closed. So that's the basic idea to be. I mean, it would be very difficult to say this at point in time, but we like to be. Thank you, Lok. I think this panel we must appreciate because they stuck to the time. All the answers have been short to the point. That gives us one more round of rapid fire to each same question to all the panelists, and we can start in this in the same order, reverse order. We'll start with you, uh, Alok. What are those top two recommendations that you have that will help to build an efficient and effective data system that benefits farmers, their organizations, and the ecosystem? Blue sky, whatever comes to your mind as the top two recommendations. Yeah, when you especially go to farmers and ask for data, the first thing they would ask is do you need this data for? So I think the data inputting needs to be done by the farmers themselves, and that is where the familiarity of data, familiarity of the platform that they use comes into play, and also the ease of use. So I think familiarity of the platform as well as ease of use will help data become more, you can say, proficient and more credible, and the farmers themselves inputting the data into the system. All right. So one recommendation that has come is the farmers have to learn to share their own data. That we need to build their capacities to do that, and we need to develop products that will help farmers ease of use to share their own data. Shubhendu, the same question to you. Top two recommendations. Yeah. So one is data has now to become an open source which is easily available. किसी को कोई अगर ढूंढे तो तुरंत मिल जाना चाहिए. सेकंड इज इंटरकनेक्टिविटी. हमारे दूसरे स्टेट्स हर स्टेट्स में कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है. अभी ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारी इंटीग्रेशन करने की कोशिश हो रही है. एंड जैसे जैसे ये डेटा इंटीग्रेशन बढ़ेगा, आज मैं एक यूपी में फार्मर बैठा हूँ गन्ने का, और दूसरे कौन कौन सी स्टेट में गन्ना हो रहा है, क्या प्राइस हो सकता है, अगर मुझे समझना है तो मैं ढूंढूं तो मुझे तुरंत की कल की प्राइस मिल जाए. ऐसा नहीं कि कोई साल भर की पुराना प्राइस मिल रहा है या कितना क्रॉप्स मिल रहा है. सो इंटीग्रेशन भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट आ सकता है. Thank you. Two suggestions here. One is to make data open, and the second one is to help data interconnectivity, interoperability between the various data systems that we have in different states, public data. Thank you so much. Nishant, to you. So first is already taken. I was about to say interoperability as well. बहुत सारा डेटा डिसएग्रीगेटेड फैशन में बहुत सारे सिस्टम्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो उसको एक प्लेटफॉर्म पे इंटरऑपरेबल कैसे बनाएं, दैट इज वन. द सेकंड थिंग इज फिजिकल नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. शायद हम लोग कभी उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे कि सब लोग खुद अपना डेटा इनपुट करें. सारे फार्मर्स का डिजिटल लिटरेसी बहुत डिफरेंट है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फॉर विमेन बहुत डिफरेंट है. तो एक टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन उस डायरेक्शन में होना पड़ेगा कि जहां पर लोग और टेक्नोलॉजी दोनों को यूज करके प्लेटफॉर्म का इमेजिनेशन होना चाहिए. जो चीज टेक्नोलॉजी से खुद हो सकती है उसका इनपुटिंग का जरूरत नहीं होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. And yeah, one more thing is sustainability, self-sustainability of the platforms. How do you envision a platform or a data-operated platform which can uh, create its own virtuous social and economic cycle is also very important for the long run. Fantastic. Uh, two ideas from here. In addition to interoperability, he also talked about very important thing. What we call as the phygital model, particularly in a country like India, जहाँ पर not all the farmers, specifically women farmers, may not be having that access to data solutions. So how do we have a hybrid model is number one. And the second one is how do we design models that are self-sustainable in nature, that also
adds value as we go along. Thank you so much, Nishant, for that. Gopesh, to you. Okay. So I think to me, two major pointers will be one is, having an integrated solution. I think that's a very, very important. Uh, Integrated solution, once I say, it should be including food, land, and water system as a whole, because all these FPOs and formal institutions will be doing that one. तो एक ऐसा सोल्यूशन जो पूरा पूरा प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक की पूरे सॉल्यूशंस दें और वहां पे पूरी चीजें हम कैसे सफर कर सकते हैं, वो एक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक जो रिक्वायर्ड है वो वही है कि डाटा डिफरेंट सोर्सेज से पड़े हैं, उसको टुगेदर कैसे लाया जाए, इंटरऑपरेबिलिटी इसको प्रमोट कैसे की जाए। साथ ही साथ उसको करते समय हम इस चीज का भी ध्यान रखें कि जो प्राइवेसी इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो एथिकल इश्यूज हैं, उसको भी हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, सो दैट इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड। आई थिंक दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड। Thank you so much. Most importantly, also, I want to underline that once again, is what we call as the integrated solution rather than looking at siloed solutions so far. Thank you for underlining that. And finally, to you, Ale, what will be two recommendations from you? I think just it's simple. I think we need to open source our data in terms of government is the biggest data bank, and agriculture needs it the most. We've seen the precedents happen in UPI, uh, starting with Aadhaar payment platform. I think open sourcing the whole agriculture infrastructure needs. It's like high time if we really want to progress, at like really high speed. Thank you. I mean, the speed and scale, both are very important, and thank you for underlining that. And we are coming to the end of this. It has been a fantastic panel, and there are 4 or 5 key areas that we attempted here. Number one is related to data needs for private sector, and we understood the importance of data transparency and the importance of building that trust when it comes to farmer to private sector interaction. The second, we also looked at what do we mean by last mile connect and the importance of uh, uh, looking at data as a empowerment tool came out very clearly in that. The third area that we looked at is the role of social impact, philanthropic capital in building that ecosystem and at various segments. The three segments that we looked at. And then we also looked at how do we harness the public data systems, the importance of data interoperability and data exchange came over there. And specifically, we also looked at, looking at how this fintech or the financial inclusion can be made and the role of the different actors who are involved in providing that fintech solution and the importance of data interoperability over there also. Uh, Ultimately, my last comment on this is, all said and done, nothing of this technology or data or anything that we talk about means anything unless it makes a real difference to the life of each and every farmer whom we are trying to serve. Right? So I think whatever we develop, wherever we develop, however we develop, the lens that we need to apply is how is it going to help her who is toiling every day on the field, and how are we going to help her to improve her productivity and improve her income, and all these suggestions somewhere along is contributing towards realizing that vision. Thank you so much. Let's give a big round of applause to this, and I think we are giving back 5 minutes to the organizers. Thank you so much. Absolutely, and thank you for that, sir. Your post-lunch difficult, but considering that you had us all attention is probably a strong indicator of how exciting this discussion was. And picking up on your last note, sir, you talked about how will data help the farmer. अ, इसी बात को आगे लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रेया सिंह जी को, लीड रिसोर्स पर्सन ग्रामीण मित्र धारावित बायो एनर्जी एफपीओ से, कि वो अपने अनुभव से हमें बताएं कि उन्होंने किस प्रकार टेक्नोलॉजी और ग्रामीण किसान कनेक्ट ऐप के माध्यम से फार्मर फार्म और क्रॉप के डेटा को कलेक्ट करके मार्केटेबल सरप्लस। आप सभी को मेरा नमस्ते। अ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से हमें यहाँ बोलने का अवसर मिला। मैं केजीसी ग्रामीण किसान कनेक्टिंग
एप्लीकेशन ऐप पे काम करती हूँ। मेरा काम है विलेज में जाना, किसानों से मिलना और उनका डाटा कलेक्ट करना। और मैं सप्लाई शेयर मैनेजमेंट पे काम करती हूँ, जिसमें हमारे किसानों का डाटा पूरा भरा जाता है और इन्वेंटरी स्टॉक मैनेजमेंट पे भी काम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे किसानों के पास कितना लैंड है और उनके पास कितना पैदावार है। इससे क्या होता Sano, generous moderator, and someone who's effectively steered this conversation, Mr. Krishnan Kalasana. I would now like to invite Mehak Nair, Documentation Officer, Agri-Based Livelihoods, Grameen Foundation, India, and Srishti Jha, Senior Executive, Knowledge Management and Program Communication, Grameen Foundation, India, to launch the compendium and photo book curated in the Mandi project, showcasing the Catalyst Awards utilization stories of the FPOs. Mehak and Srishti, over to you to take us through what this fund is about, the stories that you've captured, and also help us meet the people that uh, shape these stories. Uh, Thank you, Tanvi. Firstly, I would like to welcome you all once again to Market Access for Smallholder Farmers Conclave. I hope everybody had a good lunch and is ready for some more sessions, some more productive sessions. So while Grameen intervened to strengthen the smallholder farmers, maybe through the means of market linkages, advisory, or access to capital, we were able to capture several captivating stories, the stories of success, the stories of resilience. Now, I welcome you all to join me in celebrating these remarkable journeys of these FPOs and smallholder farmers. Capturing these stories from field, I bring to you Catalyzing Change, a compendium of case studies under Mandi project implemented by Grameen Foundation India and supported by Walmart Foundation. Alongside the compendium, we have the pleasure to also launch a captivating photo book. This beautifully curated collection of photographs captures the essence of FPO's journey, their challenges, their triumphs, and their unwavering spirits. Through these visuals, we gain a deeper understanding of the lives they touch and the landscapes they transform. Catalyst Award were granted or grants offered to selected FPOs to support their long-term institutional growth. This was intended to capacitate the FPOs in terms of infrastructure, business scale up, improve economic viability, and initiate a gender inclusive environment, among others. The Catalyst grant were also provisioned with 25% of the value to be invested by the FPO in both the tranches. FPOs were able to use these grants for several purposes. It is with great enthusiasm that we gather here to highlight the incredible impacts created by these FPOs. Their dedication, resilience, and innovative practices have not only transformed their own lives, also empowered countless others in the agriculture sector. Now, I call upon my colleague Mehek to formally launch these case study and the photo book, and also make us meet with some of these FPO members and listen to their stories. Over to you, Mehek. Thank you, Shrishti, for beautifully putting it forward about what our Catalyst Awards look like. So, without further ado, I would now like to call upon Mr. Nishant Gupta, Social and Environment Impact Advisor from Walmart, and Mr. Arabda Das from Grameen Foundation India, along with our FPO representatives from Haryali Kisan Samruddhi, Uma Maheshwar, Jamdagini,
Vedic Agri, and Kashi Vishwanath Farmer Producer Company to come and launch the compendium of case studies and also to launch the very beautiful photo book that we have created. This is nothing but this is something that the experiences are speaking from in terms of pictures. So we'll humbly want to invite all the guests on the stage. Please make it a bit quick. Uh, Mr. Prashant Gupta, Mr. Anandalas. Is Nishant in the room? Mr. Nishant, are you there in the room? okay, thank you. Please give them a beautiful round of applause. This has actually taken a lot of effort. These are some of the pictures that you can see in the backdrop, which you will also be able to see in the photo book. Thank you so much, everyone, for beautifully unveiling these products. Now, to let you know about how the Catalyst Awards have initiated a spark of change on the ground, I would humbly request Mr. Rajesh Kumar, CEO Sunanchal Sabzi Evam Beach Producer Company Limited, to come on the stage and share his experience with the Catalyst Fund. Mr. Rajesh Kumar, please. नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं सुनांचल सब्जी एवं बीज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सोनभद्र से हूँ। अ, जैसा कि बाकी सारे एफपीओ को चैलेंजेस आते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने जब एफपीओ की शुरुआत करी तो हमें भी यही सारे चैलेंजेस देखने को मिले ग्राउंड पे। तो अभी जब से हमने ग्रामीण फाउंडेशन के सहयोग से हमें अ, जितनी भी सारी चीज़ें मिली हैं, टेक्निकली सपोर्ट हो गया, चाहे वो अ, वित्तीय सहायता होगी, चाहे वो तकनीकी सहायता होगी। पहले हमारा जो काम चलता था वो हमने इनपुट शॉप पे काम स्टार्ट किया। इनपुट शॉप पे वो इसलिए ताकि हम किसानों से कनेक्ट हो सकें। तो किसान आना शुरू हुए जिनसे हमने बातचीत करी, वो हमसे बीज और फर्टिलाइज़र वगैरह परचेज़ करना स्टार्ट किया उन्होंने। बट इसमें समस्याएँ क्या थी कि हम कभी आउटपुट सेक्टर में नहीं जा पा रहे थे। हमने इनपुट सेक्टर पे वही से काम स्टार्ट किया, तो उससे हमारा टर्नओवर बढ़ा, हमसे किसान जुड़े। लेकिन किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा ज़रिया नहीं था। तो हमने मार्केट का एनालिसिस किया, डेटा पे काम किया, तो पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो हमने सरसों के तेल पे काम करना स्टार्ट किया। सरसों के तेल पे और 20% वो सिर्फ ऑयल है, वो दिखने में तो बहुत अच्छा है, बट वो केमिकल है। तो हमने किसानों से बात करी और शुद्ध तेल पे काम करना स्टार्ट किया। ग्रामीण फाउंडेशन के सहयोग से हमें थोड़ी वित्तीय सहायता मिली और टेक्निकली सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हमने एक छोटा सा प्लान बैठाया। किसानों से हमने ग्राउंड पे जाकर उनसे बात करी कि हमने बोला कि जो भी आपके पास सरसों है वो आप जो जिस बनियों को देते हैं उससे हम आपसे 2 रुपए ज्यादा लेंगे। तो उन्होंने हमें देना स्टार्ट किया, बशर्ते हमने शर्त रखी कि जो भी आपके पास सरसों है वो हमारे जहाँ पे हमने प्लांट बैठा रखा है वो आप हमें डायरेक्ट पहुंचाइए। तो उन्होंने क्या किया, वो सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करके वो हमें फिर देना स्टार्ट उन्होंने किया। इस तरीके से हमने उस पे काम किया। मार्केट में जो चैलेंजेस था वो रेट का था, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी दुकानदार से बात करी और जो लोकल में किसान है उनसे भी बात करी कि जो भी आपको लगता है कि ये इसमें
मतलब केमिकल और उसमें केमिकल नहीं है, उसके लिए आप पहले इस्तेमाल करो। वो हमने निर्म मार्केट में पहुंचाना शुरू किया। वगैरह में शादियां होती हैं तो ज्यादा तो लोग रिफाइन का इस्तेमाल करते हैं। रिफाइन में ही सब्जी पकाते हैं, रिफाइन में ही पूड़ी वगैरह सारी चीजें बनाते हैं। हमने गांव में ज्यादा कम रिफाइन का इस्तेमाल करो और बाकी अब सरसों का तेल का इस्तेमाल करो। जो हलवाई थे उनसे हमने बात करी, लोगों के घर पे जाकर हमने बात करी, तो वहां से ऑर्डर स्टार्ट हुआ कि जहाँ पे रिफाइन अगर किसी शादी वगैरह में इस्तेमाल होता है 100 लीटर, तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है 30 लीटर हम रिफाइन का इस्तेमाल कम करते हैं और 30 लीटर सरसों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वहां से हमने ऑर्डर लेना स्टार्ट किया और लगता नहीं था कि ये मार्केट हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। अभी लोकली लेवल पे हम लोग का जो इनिशियल इस टाइम पे है वो 1000 लीटर के आसपास जा रहा है अभी। तो जहाँ पे जीरो था वहां पे 1000 लीटर, तो उनको हम कैसे पैकेजिंग वगैरह होगा वो उनके द्वारा होगा। तो इस तरीके से हमने अपना काम स्टार्ट किया और थैंक्स फॉर ग्रामीण फाउंडेशन की, जिनके सहयोग से ये सारी चीजें हो पाई हैं। इन फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण फाउंडेशन हमें इसी तरीके से सपोर्ट करता रहेगा। थैंक यू। Activist case study compendium is a testament to the remarkable achievements and the transformative impact of the activists. Within its pages, lies the stories of resilience, innovation, and the power of collective action. These case studies serve as a source of inspiration for all of us, demonstrating the immense potential and possibilities within the agricultural landscape. We wholeheartedly thank each and every one of you who has supported us in initiating this spark of change on the ground. Thank you very much. Have a very wonderful day ahead. Thank you so much. Thanks, Mahek and Srishti, for bringing in these stories, change, resilience, courage, hope to the mainstream. Often it's also the women's stories that are not surfaced to the mainstream, which is What the next session and presentations is really going to discuss. We've been discussing since the morning that in the FPO ecosystem, there are several barriers that women have to face, and these challenges are often dealt with in a gender blind manner. So, in order to bolster equal participation and visibility of women in the FPO ecosystem, Grameen Foundation India undertook gender sensitization trainings for the FPO board members and shareholders, facilitated gender and household dialogues, among several other measures to increase women's participation in the agri value chain. And to talk more about it, I would like to request Rupali Avadi, gender expert of the Agri Domain Grameen Foundation India, to present the findings from the gender process documentation within the Mandi project. thanks, Tanvi. So, audience are never be I'm going you can see me. To start, we'll start with just a 2 or 3 minutes presentation. Basically, as since morning we are discussing that the project is being in Arunachal area, and some major obstacles were like the poverty was very high in prevalence, small communities in the imbalance migration because the telecom migration is very high in this region. It is no access to technology and gender inequality in healthcare system. So under the project, integration milestones were given. Like we have to give we were given a target of having 40% women shareholder in all the FPOs we are working with. So at the baseline level, when we started working with we selected the FPO,
the total percentage of women shareholders are only 57%. Through our efforts, we have now reached 38% women participation, in which out of 40, 22%, 22 FPOs have increased and growth up to around 40% women shareholders. And now we have 9,000 women shareholders in our across all the 40 FPOs. Board members, at least one women board member has to be there, but at the baseline, 10 FPOs have one women board member. Now we have two, three women board members. Like 16 women members have board members have included in so women participation is like women are now fully participating in decision making as they are in the board. And now we have 1,600 women from 162 cities. In them, 30 FPs women are earning additional income. As just Rajesh has mentioned that we have signed an MOU with the cities and now women are engaged in packaging and they are earning money. So, to foster the women participation in FPOs, we made some changes. Thank you so much. So, in policy level changes, we have made some policy changes in if you like change, including some amendments in AOA of the FPOs. We introduced a gender policy of FPO to the FPOs. So they can 40 have adopted the gender policy and they are working on the gender increasing genders. We do the capacity enhancement of these stakeholders. So to create awareness and we conduct gender sensitization training, gender dialogues, orientation training, and in last 2 years we have we are able to give training to 11,500 shareholders, CEOs, and board members. So, the gender integration process was for design study, landscape assessment, program study, and value chain study. And in analysis, gender gap assessment, the gender awareness, check the gender awareness, empowerment level, classroom gap need. And in essence, we develop some tools like gender training tools, gender dialogue, gender policy, और then sorry मैं हिंदी में नहीं बोल इसके बाद हमने पैकेज फाइल दिया और विमेन फ्रेंडली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी दिए हैं और ग्रामीण मित्र जो हमारी सही है एक्टिविटी में हमने क्या किया है पहले तो हमारी प्रोजेक्ट टीम जो हमारी मंडी की है जो फील्ड में काम करती है सबसे पहले उनको ट्रेन किया उसके बाद हमने बोर्ड मेंबर्स को ट्रेन किया उसके बाद हम जब समुदाय के पास गए तो हमने जेंडर डायलॉग्स किए समुदाय के साथ और फिर वैल्यू चेन एक्टिविटीज में प्रोत्साहित किया लोगों को कि कैसे महिलाएं वैल्यू चेन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारा अचीवमेंट था कि हमने जैसे बताया कि 9,000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है एफपीओ में वुमेन का बोर्ड में नंबर इंक्रीज हुआ था और जेंडर अवेयरनेस हुआ है बोर्ड मेंबर्स उसके बाद विमेन फ्रेंडली वैल्यू चेन एक्टिविटी में किया उससे भी महिलाओं का बहुत सारा सबसे ज्यादा जो हमें एक ट्रेनिंग था हमारा जो हमें जेंडर कैपेसिटी बिल्डिंग में जेंडर ट्रेनिंग्स किए हैं उसके बाद जेंडर डायलॉग और जेंडर पॉलिसी ऐसे कि तीनों में से सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव था वो जेंडर डायलॉग था क्योंकि हम यहाँ पे समुदाय में फैमिली मेंबर्स के साथ बात तो समुदाय के जो महिला के फैमिली मेंबर्स है उनके साथ बात करने से ज्यादा उसको मोटिवेशन मिला
फिर उसके बाद हमारा जो कैपेसिटी डेवलपमेंट प्लान था उसमें भी हमने ऐसे बिजनेसेस एडवाइस किए जिसकी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। फिर एमओयू के बाद फिर जैसे अभी बताया था कि हमने एमओयू साइन किया है एसडीएस के साथ में, इससे एफपीओ और एसएचजी के साथ डायरेक्ट लिंकेज फिर विमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इक्विपमेंट्स है इसको इम्प्लीमेंट किया है। बाकी के इसमें ऑफ कोर्स ग्रामीण में तो ये सारे लेवल्स थे जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो। हमको बहुत सारे चैलेंजेस हुए थे। तो चैलेंजेस में हमारा तो जो है महिलाएं हैं जो हमारी दीदी को है उनको एफपीओ के बारे में बहुत जानकारी नहीं। जिनके फैमिली मेंबर्स एफपीओ से जुड़े थे खास जो वो उनको मालूम था बट किसान महिलाएं दीदी वो नहीं मानती। और ये मेरी सॉरी टू से बट जितने हमारे एफपीओ से जुड़े हुए जितने भी हमारे पुरुष हैं महिलाओं को शामिल करने का उनके अंदर कोई परसेप्शन नहीं था। जब तक चाहते थे तो कहते थे क्यों चाहिए एफपीओ में महिलाएं, एफपीओ में महिलाओं की क्यों जरूरत है। दूसरी बात जो महिलाएं हमारी जो दीदी लोग एफपीओ में बोर्ड में शामिल हुई है उनका इंटरेस्ट नहीं था कि वो एक तो सोशल कल्चरल हमारे जो बैरियर्स थे उसकी वजह से वो जाती नहीं थी बोर्ड में जो बोर्ड मीटिंग से पार्टिसिपेट नहीं करती। कई बार ऐसा हुआ कि हम जब दीदी लोगों को बोलते थे कि आप मीटिंग्स में जाइए बोर्ड मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसमें जाइए क्योंकि जो कुछ एक्टिविटीज होती है तो उनको लगता है कि हमारे पास एक एडिशनल बोझ भी आता है क्योंकि पहले ही खेती बाड़ी का इतना सारा काम होता है, घर का इतना सारा काम होता है, तो एक एडिशनल बर्डन उनको लगता है। इसके बाद क्योंकि जब हम काम करें तो शुरुआती दौर में बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनको कोई वैल्यू इसका नहीं दिखता था, उनको ऐसा नहीं फील नहीं करता कि कोई हम एडिशनल इनकम हमारी बढ़ रही है। पर धीरे धीरे उसके इम्पैक्ट आना शुरू। जो स्टडी हमारा हुआ था इसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी मिले थे। इसमें यह था कि जो एफपीओ जो भी बिजनेसमैन करेंगे वो इसमें महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए सारे बिजनेस प्लान करेंगे जिसमें महिला ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। ट्रेनिंग होना चाहिए कि इन एफपीओ के जो शेयर होल्डर्स स्पेसिफिकली वुमेन्स को फोकस करके उसको उनको ट्रेनिंग देना है। एक्सपोजर विजिट कि जहाँ पे बहुत अच्छी महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है एफपीओ है ऐसी जगह पे जाके हमारे एफपीओ के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको लेके जा उनको दिखाया जिससे वो नई की स्किल्स सीख सकें। एक और ये था कि हम समय समय पे हमारे आंकड़ों को चेक करते रहे कि कितने महिलाएं बढ़े हैं, कितना परसेंटेज, कितना एक्टिव है, कितने इनएक्टिव है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ और रेगुलर जो है हम लोग अपना डाटा मेंटेन करते। ये कुछ हमने आईसी मटेरियल बनाए थे जो हमने हर एक एफपीओ के ऑफिस में लगाए हैं। इनको इसमें कुछ प्रेरणादायक स्लोगन्स लिखे हुए जो महिलाओं को मोटिवेट करें और एफपीओ मेंबर्स को। थैंक यू। रूपाली ने कहा कि ये पोडियम बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए लंबा और सर तो हमें माइक नहीं मिला तो हम चीख करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते। So on that note, We move on to our next panel, and we'll be picking up findings from this report for that. The next panel is on gender mainstreaming and integration in farmer producer organizations. The panel will deliberate upon the comprehensive and gender responsive measures to be taken across levels in order to ensure that women farmers enjoy their rights, explore opportunities, and have a seat at the leadership table within the ecosystem. The panel will be moderated by Poorna Roy Chaudhary, Associate Director, Gender and Women's Economic Empowerment, Grameen Foundation, India.
With nearly 2 decades of experience of working on issues related to women empowerment, gender justice, financial inclusion, child protection, and participation, Poona has extensive exposure of working in multi stakeholder and cross cultural environments at the local, national, and international level. Poona, can we please have you on stage, please? And joining her on stage are our speakers for this panel, Dr. Vinita Kumari, Deputy Director, Gender Studies, Manage Hyderabad. Please give her a huge round of applause. Lakshmi Iyer, Director, Innovations in Agriculture, Grameen Foundation. Manas Satpathy, Integrator, Pradhan. Can we have Mr. Manas on stage? Okay. And Ms. Anita Paul, co-founder, Pan Himalayan Grassroots Development Foundation and member, Makam. Please give them a huge round of applause. From here, I'll hand over the mic to Poorna to set the context and introduce our uh, panelists and take this discussion forward. Over to you, Poorna. Thank you. Thank you so much, Tanvi. Good afternoon, everyone. And thank you to all our panels for waiting for the entire day to be on the stage. But believe me, audience is worth it. So I'm looking forward to a very, very engaging session right now. It's the last panel of the day. But before we roll out the conversation, I just wanted to kind of set a little bit of context to the panel. So I'll read out, what I put together to set the tone. So my opening statement will be no surprise. Women farmers play an important role in agriculture and allied activities. Now, 70% of agricultural work is handled by women. Most of their work is often confined to drudgery inducing manual activities such as land preparation, transplanting, weeding, sowing, and post harvest management. Now, despite their dominance and crucial role in agricultural labor force, women in India still face extreme disadvantage in terms of land rights, access to information, resources, extension services, credit, market, and they also have very dismal representation in local farmers producer organization. And we've been talking about it all day. In 2021, the Government of India announced a central scheme of formation and promotion of 10,000 farmer producer organizations to be implemented for a period of 5 years. Now, given women's invisibility in agricultural work, there is high chance that the new age and new wave of these farmer producer organizations will mobilize only the visible and recognized farmers who are typically men and are holders of land. Though the land ownership is not a legal criteria to be a member of FPO in India. Also, men and women farmers come from gender experience, face different gender constraints and opportunities. Now, the guidelines for 10,000 FPOs, however, do not seem to acknowledge this fact. There is no mention about the minimum number of women FPOs to be formed, nor there is any mention of minimum number of women shareholders in mixed FPOs. The only non-negotiable laid down is that the FPO board of directors should have at least one female board member. Now the question is, without categorical mention of women farmers' representation and their role in FPO governance and operations, will they organically and deliberately ever be included? Now, with that context, I would like to open this panel and with our esteemed panelists, and we'll delve into three main areas of our discourse. One would be what are the existing gaps and within the FPO ecosystem, and why do women remain excluded there? Second would be, we would be discussing some of the best practices that set the gender inclusive standards and what is the value proposition of having more women in the FPOs. And then we will talk about some of the policy recommendations for stakeholders who are involved in this FPO ecosystem towards gender mainstreaming. So with that, I will open this panel. I'll start with you, Anita. So you have been, engaged
and working extensively in the space of community development for over 4 decades now. And you have been creating networks of women, collective, and specifically meant to mention that you have been kind of a spearhead in and involved with creating the Mahila Umang producer company in Uttarakhand. So it would be really, really interesting to know that, what was the experience of starting Umang, and, how did you even perceive a for-profit producer company as a channel for visibilizing women and women as farmers. So, what worked? And I'm sure there must have been many, many challenges that one had to overcome. So if you can speak about that from your experience, Anita. Thanks, Purna. Thanks to Grameen Foundation for inviting me today. Firstly, congratulations for at least putting up posters which have women farmers. That's the first step towards visibilizing the women farmers who till now have been invisible. Let's imagine a situation that women just stop farming, and then where do we as a nation stand today? Let's just imagine that नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे खेती, तो क्या खेती होगी? खेती नहीं होगी। ये कहने के बावजूद कि आप खेती से जुड़े हैं, हमारे फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, और ये भी गलत है, ये दुनिया की जो सोच है, जो बड़े किसान हैं वही हमारे प्लेट्स में खाना रखते हैं, वो भी सच नहीं है। आपका जो 75 से 80% जो लघु और मार्जिनल फार्मर्स हैं, वर्ल्ड अगर हम अपना पूरा ग्लोबल लेवल पे भी देखें, तो majority 80% of the food is actually produced by the small and marginal farmers. तो अगर हम उनका सोच नहीं अपने अपने जहन के अंदर रखेंगे, तो शायद जो हमारी पॉलिसीज होंगी वो नहीं होंगी। अब वो क्यों इनविजिबल रहते हैं? वो पहले तो रहते इसीलिए हैं कि क्या महिला कर सकेंगी? वो जो पेट्रियार्की हमारे समाज में चलती आई है, वो पहला कदम तो वही है कि हमें वही करने से रोकता है, कि हम वो नहीं कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आपने जो अभी कहा, हमारे जितने पॉलिसीज भी लगते हैं बने हैं, हम बोलते जरूर हैं जेंडर इंक्लूसिव, लेकिन वो जेंडर इंक्लूसिव करने के लिए जो 2-4 एक्स्ट्रा कदम हमें चलने पड़ेंगे, क्या हम वो एक्स्ट्रा कदम चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम में वो क्षमता है? क्या वो पॉलिसी हमें इनेबल करता है वो 2-4 एक्स्ट्रा कदम चढ़ने के लिए? शायद नहीं। जैसे कि पूर्णा जी ने अभी कहा, अगर हम 10,000 एफपीओ की बात करें तो वो नहीं होता है। एक तरफ ये है। सेकेंडली, अगर हम देखें कि अगर हम एक तरफ से बोल रहे हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक प्रोडक्टिविटी का सवाल है, वो अगर गिरती ही जा रही है, तो हमारे किसान भाई अपने हाउस होल्ड का इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए माइग्रेट करेंगे ही। और अगर वो माइग्रेट करेंगे ही, और अगर हमारी महिलाएं और हमारे बुजुर्ग हमारे गांव में रहते हैं, तो क्या अगर हमें खेती संबंधित कुछ भी करना है, तो क्या हम उनकी जरूरतों को जहन में रखा है? शायद नहीं। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, अगर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, तो पॉलिसीज में भी वो चेंज लाना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे महिलाएं अगर वो आगे नहीं आ पाती हैं, वो इसलिए भी नहीं आ पाती हैं क्योंकि जहाँ तक केयर गिविंग का जो फंक्शन है, जहाँ तक हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे खेती का सवाल है, हमारे जानवरों का सवाल है, वो सारा का सारा लोड महिलाओं के ऊपर ही है। और अगर हम लीडरशिप रोल लेके आगे आएंगे, तो हमें मॉड्यूल्स बनाने हैं जो ये सारे फंक्शंस को नजर में रखते हैं, हमें इनेबल करता है आगे वो कदम उठाने के लिए। तो अगर हम एक चीज और भी देखें कि जहाँ तक नेचर और प्रोडक्शन या नेचर और मैन नेचर जो रिलेशनशिप है, उसको अगर हम देखें, तो जब भी महिलाएं खेती करती हैं, उनका जो जो नेचर है, उनकी जो पूरी साइकिल है, सीड सोवरेनिटी है, बीज का संरक्षण है, वो सारा अगर हम एक तरफ से देखेंगे, तो वो महिला उसमें प्रमुख रोल रखते हैं। और अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है और इमरजेंसीज है और ये सब है, तो हमारी जो पूरी सोच है वो दोबारा से वापस रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, एग्रो इकोलॉजी के ऊपर आ रही है। और आज की सुबह के सेशंस में कहा था कि हम इससे कार्बन क्रेडिट भी ले सकते हैं। अगर हम ये सब करना चाहते हैं, तब इसमें भी फिर महिलाएं ही सही है, और उसको फर्स्टली रिकग्नाइज करना अपने जहन में कि इनका एक रोल है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अफर्मेटिव एक्शन।
और इन द सेंस कि एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो जो पॉलिसीज आ रही हैं आज के इसमें, हम चाहे वो डेटा सोल्यूशंस लें, डिजिटल लें, या हम एआई का वो सब ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सारे सॉल्यूशंस जो हैं, वो तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल आज सुबह में बहुत दिनों बाद किसी ने कहा, और वो भी हमारे सरकार में से किसी ने कहा कि अगर स्मॉल इज ब्यूटीफुल देन वी मस्ट एक्चुअली रिकग्नाइज दैट, और हमें कोई ये ऐसे मेगा सॉल्यूशन जिससे एक्चुअली में अगर वो होंगे तो शायद महिलाओं का मार्जिनलाइजेशन और बढ़ेगा, ना कि वो कम होगा। ये सारा करते हुए अब मैं, अगर आपका नेक्स्ट सवाल था कि मैंने उमंग क्यों क्रिएट किया, हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं, और उत्तराखंड में जो फेमिनाइजेशन, ये पहाड़ी उत्तराखंड, जितने भी आपके हिल डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली उत्तराखंड, वहाँ पे आपका फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एकदम ज्यादा है। आपके मेल और जनरेशन वहां से निकल गए हैं, और हमारा लैंड होल्डिंग 1 एकड़, 1 एकड़ के आधार पे हम लोग अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। और जब हम लोग काम करने वहां उतरे, हमारा भी एक्चुअली में हमारा जो प्रोफेशनल जिंदगी है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, डॉक्टर कुरियन और अमूल की प्रथा से चालू हुई थी। तो इसीलिए फार्मर्स का जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव मॉडल है वो हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसका मतलब जो स्टेक होल्डर्स है, जो फार्मर्स है, उनका सेंटर स्टेज होना और उन्हीं की ओनरशिप होना, नॉट जस्ट एज अ प्रोड्यूसर बट ऑल्सो एज अ मैनेजर एंड ऑल्सो सिटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ताकि उनका जो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह है उसमें उनका रोल रहे। हम लोग ने ये नहीं सोचा कि हम 40% महिलाएं करेंगी, हम 20% महिलाएं करेंगी, हमने कहा 100% ही महिलाएं होंगी। और इसलिए हमने आगे पीछे ना देखा ना सोचा, हम लोग का उमंग में 100% ही महिलाएं। अभी बीच में आके थोड़ा सा हम लोग ने 5-10% मेल मेंबरशिप भी की है, वो भी इसलिए क्योंकि जहाँ तक बी कीपिंग, अगर हम शहद का बिजनेस को देखते हैं, दैट इज मेल सेंटर्ड एंड देयर इज नथिंग अगेंस्ट इट। तो जहाँ तक उनका भागीदारी का सवाल है, तो हमने उनको भी आमंत्रित किया है। अब एक तरफ से प्रोड्यूसर्स है, वो तो है नो। अब हम क्या सोच रहे हैं कि जो एफपीओ है वो एक मैजिक हो जाएगा, वो प्रोड्यूसर भी होगा, वो मैनेजर भी होगा, वो गवर्नेंस भी करेगा, वो मार्केट में भी जाएगा, और वो सब के सब कार्य कर लेंगे, और वो सारे के सारे बदलाव हमारे 2 या 3 वर्षों के अंदर ही हो जाएगा। इन रियलिटी में शायद वो होना मुश्किल है, और वो सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो रिस्क अवर्स है। अगर हम देखें तो हमसे, हमारे किसानों से ज्यादा रिस्क लेने वाला आज के दिन में शायद ही कोई और प्रोफेशन होगा। और अगर जब तक हम वो फार्मर्स की डिग्निटी उनको वापस नहीं लौटाएंगे, तब तक शायद हम लोग के जेबों में पैसे जरूर होंगे, लेकिन खाने के लिए उत्पाद नहीं होगा। नो, तो अगर हम लोग ये सब देखें तो हमने महिला उमंग को क्रिएट किया, जिसमें 1500 महिलाएं शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन हमने क्या किया, वो स्वयं सहायता समूह को हमने शेयर होल्डिंग दी, क्योंकि आपका हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा चीज है कि स्वयं सहायता समूह आई थिंक सभी स्टेट्स में हजारों के हैं, और वो जो है वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे लीडरशिप डेवलप होता है, जहाँ पे फाइनेंशियल स्क्रूटिनी के जो हैबिट्स है वो सब वहाँ से चालू होते हैं, और वहाँ पे बहुत हद तक लीडरशिप आपका अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के माध्यम से हुआ है। हमने उस वहां से चालू करके आस्ते आस्ते करते हुए उनको 2009 में उमंग ने फिर अपना गठन किया, मच अहेड। जब तक ये पॉलिसी आई थी तो हम बहुत पहले आ गए थे। लेकिन और जहाँ तक प्रोफेशनल्स का भी सवाल था, हमने वहीं से, उसी एरिया से प्रोफेशनल्स का भी चयन किया। वहाँ पे आपके ग्रेजुएट्स और जो भी है वहीं से करते हुए उन्हीं को आस्ते 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 ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हुए उन्होंने सिखाया। चैलेंजेस हैं अभी भी, जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो चैलेंजेस जो बहुत ज्यादा मैं नहीं टाइम और लूंगी, जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, आज सुबह से पूरा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल का वो चल रहा है। मेरा कहना सिर्फ एक है, एक रोल होता है बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर का। आपके जितने भी एफपीओज हैं, आपका प्राइमरी, अभी एक भाई साहब आके बोले थे, वो अपने गांव में, अपने पड़ोस के गांव में, डिस्ट्रिक्ट तक, स्टेट तक मार्केटिंग करने जाएंगे। लेकिन जहाँ तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है आपके ई नाम और वो सब जो है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आज तक हम
हमने उनके माध्यम से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए, नंबर वन। सेकेंडली, क्योंकि एफपीओ का आपकी मंडी, आपके नेबरहुड, आपका जो आना है, हमने वो वैल्यू एडिशन भी किया। हम लोग का जो वहाँ पे फल है, हमारा वो फल जैसे खुमानी और पुलू में जो बहुत हार्ड फसल नहीं है, उसका जैम चटनी बना के, आपके मसाले बना के, आटा बना के, नमकीन बना के, लड्डू बना के, इस तरह से सारे वैल्यू चेन विद ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं, वो बहने ही कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि कुछ लेवल तक जो बहुत दूर के मार्केट है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें एग्रीप्रेन्योर्स या आपके हमारा चल रहा है, वो बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स का रोल को आप अनदेखा नहीं कर सकते। और आपके जो प्राइवेट सेक्टर से उभर के आ रहे हैं, वो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका साथ आजीवन देंगे। वो आज है, वो कल नहीं है। और जो बिजनेस का जो माहौल है, उसमें भी एक बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हद तक वो बिजनेस, आपके जो प्राइवेट सेक्टर है, वो एफपीओ को एक तरह से सस्ता एग्रीगेटर के रूप में देखने लग गए हैं। जहाँ तक बैंक है, वो सोचते हैं अरे इनके माध्यम से लोन अपना फटाफट पहुंचाओ। ये देखना है कि वो लोन क्या ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए सूटेड है। प्रॉब्ली नॉट। इट्स द सेम मॉडल एट 8-9% इंटरेस्ट जो आप एक प्राइवेट सेक्टर को भी देते हैं, वही प्रोडक्ट को अगर आप लेके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए आएंगे, आई थिंक वो हमें दोबारा से ड्राइंग बोर्ड में जाके अपनी सोच को थोड़ा और गठित करने की जरूरत है। क्योंकि जहाँ तक फार्मर्स वेबसाइट का सवाल है, वो फार्मर्स वेबसाइट की जो लोन सब महिलाओं के ऊपर थोपा जा रहा है, फार्मर्स वेबसाइट महिलाएं भी करना चालू हो चुके हैं। आज के दिन में आंकड़े कम है। As you work with Pradhan, and I don't think an organization like Pradhan needs any introduction whatsoever. So the kind of work that you do, uh, it is uh, it is incredible how the voices of the grassroots is there in the DNA of the organization. For including me in this panel. It has been great to listen to all the presentations throughout the day. Okay, so to talk about our experience, I would like to first say that the context you presented it quite well. That is the fact that in spite of women constituting 65% of our agricultural labor force, a program launched as recently as 2020 doesn't talk about women's FPOs. So that is the reality. So they are invisible. That's very clear. And gender mainstreaming is not about getting more women to the system. It is one of the steps, but that is not all. But the main challenge is to transform our systems to be more gender responsive and inclusive. And this program clearly says that it is absent. So the challenge is huge, and just getting them to the system, that is only the first step. So our experience also is like that. We started forming women's SSG, I think, as early as 1987. But still, many things we learned that just including them doesn't change the situation much, doesn't help them take decisions, doesn't help them to have control and access over income. It needs much more efforts. So just to say that this program should have provision for women's secure couldn't have been adequate. Additional resources are required to really, if you seriously want women to also get included in such programs and prosper. So there is no talk of gender budget in, I think, in all these programs. Actually, they are not seen as farmers, even though the fact is that men are migrating in search of jobs and women are taking care of agriculture. They are not recognized as farmers. Any one of us also, when we talk of a farmer, what image comes to us? It never is that we think of a woman. So that is the reality. But it has to change if we understand. Many things have to be done simultaneously. So our experience suggests that anywhere if we really want to mainstream gender, the first thing is to do a gender need assessment with them. We should them. We should not transfer what we have learned in another context to them and impose ideas on them. Again, we do the same thing by keeping the decision making with ourselves and making them act on something that we think is right. So that is the challenge. The gender need assessment is very important, and that process itself helps them to go through self-realization, understanding their contribution to the present situation, and resolving to act to change it. And they have to set the priorities. So that is what we have developed these tools
of course, by working with expert organizations like Jagori. But now we have these tools in place that we need to do a gender need assessment. And the second step is that, and we will bring about that change in whatever way possible. They will decide the action and they act. So that is an also important step in our strategy, that they decide where to act, how to act, and what is they set the priority. But that first disturbance creation is must. Then third is that the change has to be driven from within. So it should not be anchored by somebody else, and they should just execute the action. They have to be the author and owner of the action. So what we do, so how to bring about change in every woman? So that is also a huge task when we work with uh, 100,000 women. So we promote this CRP, women CRPs. So they also are selected through some process, so that they have gone through something in their life. So they have taken some different steps to change things. So those kind of women are selected who can in turn inspire, because finally the change, the self-realization is required at every woman's level. So this is an approach that we prepare such local cadres to be the change agents and inspire other women to come together and change the situation. And it doesn't require any non-violent means to bring about the change. It only requires them to first decide that yes, change is required, and then to engage holders, including men, to bring about that change and make them the partners in the change process. So this is what we have realized, that these things work, but finally every woman has to go through that realization. And then if economic empowerment has to be done, then social and political empowerment have to be done along with that. Otherwise, again, the same thing will remain. They will do the hard work, they will produce, and the men will go to the market, and the control and access over income will remain with the men. So, and the fact is, again, the studies say that when women are managing farming, the yields are 20% less than when men are producing. So it is not because of they are less capable, because they have less access to everything that is required to do farming, whether it is credit, whether it is inputs, whether it is, and we are not helping them to access everything that is required. It is a national loss also. So when we want to empower women economically, social and political empowerment also is must. That is why social empowerment I have already talked about. We also focus on their political empowerment, so that all the forums, in many places women even didn't know that they can attend Gram Sabha. So now we have come up with the system that they are preparing the village development plans by involving men, but they are taking the lead. They are getting them approved in the Gram Sabha, and they are implementing it, because uh, they need access to water if they have to be a good farmer and produce more. So they are preparing these village development plans, getting them executed under MG and REJ, and they are learning all that is required to be a good farmer, good producer, generate surplus and take it to the market and have control and access over that income to plan again its utilization for their family benefit. So that is where we have reached. So this is one. Then second thing is that we have to amplify their voice. Some good work is done. Women have produced results. It has to be taken to many other stakeholders, even men, even other communities nearby. So this now the structure exists. NRLM has done good work by having all these women's institutions everywhere, but they have to be transformed to this stage that they take charge of their lives and they proactively engage with other stakeholders to amplify their voice. And then all such organizations realizing the importance of mainstreaming gender in agriculture again have to collaborate, and then we together can bring about the required change in the system to really see the day that we want to see. And for that, the last session emphasized a lot on data. That is also very important for creating evidence and for influence. So these are all from our Manas, experience. thank you Thank you. so much. You really strummed my chord with your probably one of the opening statements where you said, and when you imagine a farmer, you do not ever see the face of a woman, which is such a tragedy. Uh, Second is also, the way you have described the entire program. I think it is good enough for us to even draft a proposal. So it's so many
so many nuanced and empathetic aspects that you have worked in, starting from women's agency, where changes starts from within, male engagement, community engagement, stakeholder engagement, and but at the heart of where what you say lies that women who is actually visible and should be recognized for the contribution that she makes uh, in the agricultural economy, in her household, and the larger community as well. So thank you for sharing all of those experiences. Really, really valuable. Now, I'll come to Dr. Vinita Kumari now, and you know, Vinita, you have been with the academia for many many years, and there are a lot of papers that you have published, on the role, women's role in agriculture as well. And again, I think a core of your work is also focused on how agricultural extension services exclude women. So, if you can share from your knowledge and understanding of this issue, that what are the major factors that lead to women's limited participation in these agricultural extension? If you can talk about that, I think it will be really insightful. Yeah, thank you so much, Purna, for putting this question to me. Because we are not directly, किसान एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्धीन हमारा मैनेज इंस्टीट्यूट काम करता है. वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द मिनिस्ट्री और एक्सटेंशन programs जो भी है national level पे we are building the capacities of agriculture and allied sector officers. But what we observe that there is a gap, lot of gap in women's participation. और since मैं gender पे काम करती हूँ, we are addressing women farmers issues. So according to me, from my experience, I feel that सबसे बड़ा जो major constraint है, which has also been highlighted in the presentation by I think Rupali, where they have mentioned about women's triple burden role, that we now call it as time poverty. विमेन का क्या है, उनको घर का भी काम करना है, उनको खेत पे भी जाके काम करना है, और उनको कम्युनिटी रिलेटेड भी काम करना है, दैट वी कॉल ट्रिपल बर्डन. तो उनके पास एक तो टाइम की स्कैसिटी होती है, दूसरा जो भी वो खेत पर काम करते हैं दैट इज ऑल मैनुअल. उनके पास मैकेनाइजेशन नहीं, इवन सिंपल टूल्स, जो सिंपल टूल्स भी वो यूज कर सकते हैं, दे आर नॉट यूजिंग इट. तो जो काम वो 10 मिनट में या आधा घंटा में कर सकते हैं, उसके लिए वो 2 घंटा खर्च करते हैं. तो वेयर इज द टाइम फॉर देम टू डिवोट सम टाइम फॉर देयर अपस्केलिंग, देयर अपडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल. तो सबसे बड़ा है, अगर हमें विमेन को टाइम पॉवर्टी से उनके एड्रेस करना है, तो जेंडर डिविजन ऑफ लेबर, जहाँ पे अभी पुरुषों को भी महिलाओं के साथ घर के काम में, बच्चों की देखभाल में हिस्सेदारी उनको बटानी होगी. दिस इज व्हाट वी आर नाउ लुकिंग फॉर द फैमिली participation. Gender is not women. Gender को by default we understand it is women, but gender तो men women both है, girls boys both है. तो हमें this is a family approach. जब तक हम फैमिली अप्रोच नहीं लेंगे, तो पार्टिसिपेशन ऑफ ओन नहीं लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. तो टाइम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हमें मेन पार्टिसिपेशन, स्पाउस पार्टिसिपेशन टू शोल्डर देयर वर्क को जरूरी है. मैकेनाइजेशन हैज टू बी ब्रॉट इन. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा जो मेन another very important factor is literacy level of women herself, because अगर अभी हम literacy level देखें, still literacy of women, whether it is urban or rural, it is still lower than male. तो और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लिटरेसी लेवल वुमेन की देखें, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मैट्रिक. वो चौथी क्लास 5वीं क्लास तक है, तो उनको ज्यादा टेक्नोलॉजी रिलेटेड उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, या वो उसको समझने में उनको मुश्किल आती है. तो दे थिंक कि ये विमेन को भी ऐसा लगता है कि ये तो हम जाएंगे तो मेरे काम का चीज नहीं है, उधर वो जो बात करेंगे मुझे समझ में नहीं आना. फैमिली ऑल्सो फील्स कि तुम्हारा वहां जाकर क्या करना है, तुमको वहां क्या समझ में आना है, बाकी अपना काम देख लो. सो दिस इज अवर फैमिली एंड मेंटालिटी, जो भी कहना एटीट्यूड और परसेप्शन ऑफ द कम्युनिटी और द वुमेन. सो दैट इज ऑल्सो वन मेजर फैक्टर फॉर दिस पुअर पार्टिसिपेशन. और जो दूसरा मुझे लगता है कि जो हमारे एक्सटेंशन फंक्शनरीज है, जो डिलीवरी देते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, स्कीम्स, कैंपेन्स, they are still mostly male, and ours is still a
कंजर्वेटिव बाई लार्ज, हमारा कंजर्वेटिव है जहाँ पे महिलाओं को उतनी फैमिली से नहीं छूट मिलती है कि आप जाओ बात करो, और इवन इफ दे गेट सच परमिशन टू अटेंड सच प्रोग्राम्स, तो दे विल नॉट ओपन अप, वो झिझकती है, शर्माती है मेन के सामने अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये भी एक कारण है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उनका एक्सपोजर बहुत कम है महिलाओं का। अभी भी आप छोटे छोटे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, अभी हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ड्रोन सर ये सब की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अगर आप उनसे रिलेटेड वुमेन फ्रेंडली जो टूल्स ऑलरेडी आईसीआर सिवा ने, हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, इन लोगों ने जो डेवलप किया, उनको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, दे आर नॉट नोइंग इट, दे आर नॉट यूजिंग इट, तो उनका पार्टिसिपेशन ऑलरेडी कम। इस काफी सारे फैक्टर्स है जो इस तरह का, हमारा सोशल बैरियर्स भी है, सोशल बैरियर्स है, कल्चरल बैरियर्स है, जिसके वजह से भी वुमेन को इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी उनको जाने के लिए इजाजत नहीं मिलती है। सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट आर देयर फॉर पुअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एक्सटेंशन फंड। और मैं यहाँ पे वुमेन फार्मर्स की क्यों बात करूँ, हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर डूइंग मोर देन 500 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन अ ईयर, और जब हम वुमेन को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाते हैं फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेरी फ्यू वुमेन टर्न अप फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि वो बोलती है बच्चों को घर में कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा, 1 वीक के लिए हमें अपने जगह से हैदराबाद आने में बहुत मुश्किल होता है फैमिली मैनेज करना। तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ सच थिंग फ्रॉम अ पुअर रिसोर्सलेस वुमेन फार्मर्स, उनको तो वही उनकी आजीविका है, अगर वो नहीं काम करते तो दे विल बी मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब हमारे इस तरह के ऑफिसर्स नहीं आ पाते टाइम निकाल के, तो वुमेन के लिए तो ये जो ग्रामीण स्तर पे काम कर रही है, इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट। तो वी हैव टू ओवरकम ऑल दिस चैलेंजेस, इज व्हाट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज को अपनाना है और उनमें अभी तो हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं, बट अभी हम डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इसकी तरफ मूव करें। इस बार का हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन में द थीम वाज डिजिटल empowerment of women for in digital world to address the digital gap, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे women नहीं कुछ कर पाएंगी, तो अभी जो हमारा एक स्टडी दिखाया था कि इंडिया का रेफरेंस में जो करंट हमारा जेंडर गैप में है, अगर उस गैप को कम करना है, इट विल टेक ऑलमोस्ट मोर देन 300 years। 300 years के लिए nobody is there to एटलीस्ट 4-5 जनरेशन चला जाएगा उस गैप को एड्रेस को देखने के लिए। तो विद करंट सिचुएशन अगर इतना टाइम लगने वाला है, तो वी कैन अंडरस्टैंड द पेस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इज ऑल्सो दैट कन्विंसिंग द मैन, बिकॉज मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब हम जेंडर ट्रेनिंग करते हैं तो वुमेन को भी भेज दिया जाता है, जो भी हम ट्रेनिंग में लिखते हैं, हम वी राइट वेरी क्लियरली कि नॉमिनेट इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, बिकॉज मैन सेंसिटाइजेशन इज मोर, उनको जाकर फिर उनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को, उनके इन लॉज को भी सेंसिटाइज करना है। तो women will come for the training programs। ये हमारा माइंड सेट, जेंडर स्टीरियोटाइप की जो हम बात करते हैं, तो वी हैव टू ओवरकम दैट जेंडर इज नॉट वुमेन, जेंडर इज नॉट ओनली फॉर वुमेन, और जेंडर रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम्स है दैट इज नॉट फॉर वुमेन, मेन का मोर पार्टिसिपेशन इज है। तो ये चेंज हमें लाना है ताकि मेन को कन्विंस कर सके, उनको सेंसिटाइज कर। दैट इंक्लूड्स मेन ऑफिसर्स, बिकॉज वी डील विद एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, वेटनरी ऑफिसर्स, हमें उनको कन्विंस करना। Once I had a very difficult time to convince one deputy director level of officers. He was from Rajasthan. We all know Rajasthan में कितना women के लिए conservative माहौल है। तो he was not ready to agree कि हमें women को ये सब चीजें facilitate करना है, ये देना है। तो this is the amount from educated male person. So this is where we are lacking. क्यों women का participation नहीं हो पा रहा? तो men don't care, वुमेन आती है नहीं आती है, उनका नंबर फिगर वो दे दिया। और दूसरा ये भी है कि जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा में बहुत कंफ्यूजन रहता है। पीपल थिंक कि हमने रिपोर्ट में 30% 40% वुमेन लिख दिया, 50% एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर दिया, तो दैट इज जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा। लेकिन हमें उन्हें सेंसिटाइज करना है कि जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा इज फार बियॉन्ड सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा, जहां पर
हमें we have to find the underlying cause. अगर 20% participation of women था, if there is has been no change in few decades, so why it was so? All the five W's and one H has to be answered. We have to arrive at the root cause. तभी हम उस चीज को, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं जब तक वो जड़ तक नहीं पहुंचेंगे वो आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते. तो लाइक वाइज टू एड्रेस जेंडर कंसर्न्स उसको हमें उसके रूट तक जाना है. So there are lot many such things which we need to address. अगर women's का participation हमें ensure करना है कि it has to come, and of course community and family support is very very important. Without that अगर हम women को आज यहाँ motivate कर देते हैं घर पहुँचने के साथ सारा motivation उनका नील बटे सन्नाटा होता है ना वो हो जाता है. तो वो सब शून्य हो जाता है, आपका तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है. तो टेक इनटू कॉन्फिडेंस द फैमिली फर्स्ट, तब आप विमेन के पास पहुंचो. तो आई थिंक फैमिली अगर इनकरेज मोटिवेट करेगा डेफिनेटली वी विल गेट बेटर पार्टिसिपेशन. Nidita, thank you so much for covering the entire social. Piece. And also touched upon the extension services. To take the extension services to the community and to the women. If there is no women there who are taking these services, then they don't even see women farmers as the potential audience and client for them. So it's again, I think it's also kind of goes back to the business correspondent model that we talk about, which is responsible for the financial inclusion of our country as well. Where if you don't have female business correspondent agents, then that would not have more women customers coming into the banking sector. So even from the supply side, if we don't have women faces, then it does not include at the grassroots at the community as well. So thank you for putting in agriculture, but very many departments as well where gender and women have been systematically excluded. So thank you for sharing those thoughts. Lakshmi, so as an expert on innovations in agriculture, you also have worked very, very closely with the Grameen Project Mandi team, where we were building the capacity of these FPOs and mainstreaming gender in the FPO ecosystem. And based on the presentation that Rupali did here, which aspects do you feel could be the blueprint for capacitation of FPOs towards On this panel with these amazing experiences of promise. Um, that is a really mobilization meetings and talking with these FPOs. I think that is a real key piece. And I think I hear it from each of these panelists talking about how important that is and the amount of time it takes to do that. So I think we really have to underline and underscore towards thinking about these issues as opportunities. I think that is a really, really important piece of the puzzle. And behavior change, as we know, takes a lot of time. So the time mentalities. And I know that what we have done is shifting women's numbers, and I know that you were speaking a lot about that's that's the first step, but it's not enough of a step. And I think so. There's a lot of mindset shifting that comes with the community, with engaging men. We at Grameen talk a lot about a he for she type of strategy, where we're bringing men along into the equation, and I think that's really critical. About the various different technologies that are needed on the ground, what is needed by these women, really kind of honing in on what those needs are, the products and services they can shift time and time again. It's not like we're static individuals or robots, so it's important to know that. And along with that comes the business case for the farmer producer organization and thinking about some of those shifts that they can make as a business. How do they take into consideration women's participation in that way? And thirdly, to just talk about the prerequisites that are required and because that goes along with the blueprint. If we don't initially have individuals or FPOs that are willing to start this process of kind of shifting into this direction and thinking about gender mainstreaming as a way in which they can incorporate women
their businesses and the micro entrepreneurship opportunities into their capacity development plans, which is what we did, a visioning document to help support the FBOs to start thinking about these opportunities in a very business minded and business oriented way. What is the business case? I mean, oftentimes this is the question that FPOs begin asking themselves to shift that perspective. So I think that is ultimately kind of the blueprint that we see for FPOs kind of shifting that mentality. I hope that. Yes, thank you so much, Lakshmi. I think many of you spoke there's a common denominator sitting in all of your perceptions and insights that one is number is just the first step. And even our experience working in the Mandi project, we did achieve the number and then we went ahead and asked ourselves, then what? Does that mean automatically there's a decision making that is happening at the FPO governance level and in the women's role in market access or in the value chain as well? So there is a lot to do, and the other thing I think all of you spoke about is male engagement and gender is not just about women. And I think also, Lakshmi, when you talk about the gender and household dialogue and going into the community, into the households, creating that buy-in and creating that support mechanism, unless we do that, we cannot pull out women and work with them in silo and expect that the entire systemic change, which is so patriarchal in nature, is going to turn around and support women. It's not going to happen. So having women working with women, we certainly need to work with men as well. So thank you for all of that insights. I know this times up thing has been is making me very nervous. So this timing for this panel is over. I wish I could kind of go on and on and on, but we do have a voice from the field. We have Rani Mishra with us, and she's going to also present her and share her experience. So let me quickly introduce Rani to you. So Rani started Fortunately Farmer Producer Company in the year 2020 with the aim to visibilize women farmers from Pratapgarh districts, which is one of the most backward districts of UP. And when Rani registered her company, she faced a lot of challenges from her community. Neither did she get much support from her fellow women farmers. And, also then she reached out to local self-help groups. And that opened the doors for Rani. She now had women from the SHG enrolled as shareholders in her FPC. And in 2021, fortunately, FPC partnered with Grameen Foundation India and received support through capacity development and the Catalyst Fund that we spoke about. And with this fund, Rani started the vermicompost unit, which helped to generate additional income for some of the women shareholders. And in addition to that, she also organized various trainings for women farmers on new agricultural technology. And today, Rani is able to connect to more than 600 women farmers, and she's recognized as a role model and agent of change in our community. So Rani, please, आपकी experience आप हमारे साथ share कीजिए, please. सभी मंचासीन अतिथिगण का हमारा सादर प्रणाम और हमारे बीच में आए हुए हमारे जितने भी अतिथि हैं सबको हमारी तरफ से सादर प्रणाम। मैं प्रतापगढ़ से रानी मिश्रा, जैसा कि मैंने बताया, फॉर्चुनेटली किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से मैं वुमेन्स पे ही काम करती हूँ। हमारे यहाँ महिला ही किसान हैं और जो भी हमारा जो महिलाओं का ग्रुप ही है, हमारी एपीसी में महिला के द्वारा ही हम वर्मी कंपोस्ट पे काम करते हैं। सबसे पहले जब मैं एपीसी बनाने शुरू की तो मुझे लगा कि ऐसा ऐसा कुछ क्या चेंज करके हम एपीसी को अपने बनाएं जिससे कि कुछ अलग प्रतापगढ़ में एक एपीसी उभर के आएगी। तो मैंने एनालिसिस किया कि पुरुष की जो संख्या थी वहां पे एपीसी हमारे यहाँ बनी हुई थी, वो लगभग 17 से 18 एपीसी बनी थी जो कि सब पुरुषों पे ही काम कर रहे थे, महिलाओं पे कोई भी एपीसी काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने
जब मैं अपना पीसी बनाई तो मैं महिलाओं पे बनाई, और फिर महिलाओं के बनाने के बाद उसी समय कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में मैंने पीसी बनाया था, तो बहुत सपोर्ट भी कहीं से मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हमको जो जो चीज़ जो सपोर्ट चाहिए था वो चीज़ें नहीं मिल रहा था। हम कैसे पीसी को चलाएँ ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रहा था। उसी बीच में हमारे बीच में गवर्नमेंट फाउंडेशन आया, और गवर्नमेंट फाउंडेशन ने इतना सपोर्ट किया कि मैं महिलाओं के साथ में जुड़ करके जब मैं कार्य को करना शुरू की, तो उसी समय रूपाली मैम पहुँची और उन्होंने कहा कि मैं जेंडर के लिए मैं खुद काम करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा कि अब तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए अब हम बहुत कुछ कर पाएँगे। फिर हम लोगों ने महिलाओं के साथ में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट डाली, और वर्मी कंपोस्ट यूनिट इसलिए हमने डाला कि क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि सब पशुपालन किए हुए हैं, महिला जो हैं वो घर पे पशुपालन का ही कार्य करती हैं, तो उनके यहाँ से रॉ मटेरियल मिलना मेरे लिए आसानी था। ऐसा मुझे लगा, तो मैं वर्मी कंपोस्ट का डिसीजन लिए, और आज हमारे साथ में महिलाएं सब वर्क कर रही हैं, और 1210 हमारे यहाँ महिला फार्मर प्रोड्यूसर जो है कि महिलाएं हैं वहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और साथ में ही महिलाओं के लिए क्या बेहतर हो सकता है इसके लिए भी हम लोग सोचते रहते हैं, और महिलाओं के बीच में हम लोग समय समय पे मीटिंग्स करते रहते हैं, जैसे उनके बीच में जा करके इस तरह का क्या डेवलप किया जाए कि जिससे उनको पैसे की जो नीडें हैं वो पूरी हो सके। तो ग्रामीण फाउंडेशन की तरफ से अभी हमारे यहाँ अ, पैसा निकालने का कार्य आया, तो हम लोगों ने उनको दिया कि आप लोग पैसा निकालिए, उससे पैसा कमाइए। फिर ग्रामीण फाउंडेशन की तरफ से ही हमको वहाँ पे एक ग्रामीण मित्रा मिली थी, जिसके द्वारा हम लोगों ने उसके वहाँ से पैसा मिलता था, तो हम लोग आसानी से गाँव में मीटिंग कराने का जो कार्य होता था उसको हम लोग आसानी से कर पाते थे, क्योंकि जब हम कुछ चीजें अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ में शेयर करते थे, कुछ चीजें जब बनाते थे, उसको हम महिलाओं के बीच में कैसे ले जाएं, इसके लिए हमको दिक्कत होती थी, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोगों के पास में बिल्कुल नहीं था। तो ग्रामीण फाउंडेशन ने हमको बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं पहले अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और ग्रामीण फाउंडेशन के आते ही मुझे मैंने कोई भी संस्था, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं किसी संस्था के द्वारा अपने एफपीओ को मैंने बनाया था। हम खुद महिलाओं ने मिल करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो हमारे कंपनी में ऐसा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था कि उसको कैसे हम लोग चलाएं, और महिलाओं के पास पैसा तो होता ही नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने, जब यहाँ से हमको पैसा मिला और जब हम उस पे काम करना शुरू किए, मुझे 2 कैटलिस्ट जो मिला है, उसमें फर्स्ट में मैंने उसका वर्मी कंपोस्ट का यूनिट बनवाई थी, जो कि 30 यूनिट हमारे यहाँ फिट बनी हुई है, और उसमें अब इस समय हम लोग उसका पैकेजिंग और ग्रेडिंग करके मार्केट में कैसे उसको हम लोग उतारें। तो हमारे यहाँ इसमें हम लोग अभी बोर्ड की बैठक में वो सोचे कि ठीक है, जो गांव में बिक रहा है वो तो बिक ही रहा है, तो अमेजोन और अ, और जो भी प्लेटफॉर्म है उस पे उसमें हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया है, जिसमें अभी हमारे यहाँ अमेजोन पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि कोड वहां से जनरेट हो गया है। इंडिया मार्ट पे भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अभी कोड नहीं मिला है, जल्दी हमको कोड मिल जाएगा, और ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए हम लोग तैयार हैं, और मार्केट में हम लोग बहुत जल्दी ही अपने प्रोडक्ट का लॉन्च करेंगे। और साथ में ही हमारी महिलाएं इस समय कुछ महिलाएं और कुछ भी करना चाहती हैं, क्योंकि हर कोई वर्मी कंपोस्ट ही नहीं बना सकती है, तो उनके लिए भी हम लोग अभी सोच रहे हैं, और जल्दी हम लोग बैठ करके ग्रामीण फाउंडेशन के जितने एक्सपर्ट हैं उनके साथ में हम लोग मीटिंग करेंगे, और उस पर भी हम कार्य को करना शुरू करेंगे। थैंक यू। To you. थैंक यू रानी, आप सच में इंस्पिरेशन है। मैं चाहूंगी आप फिर से स्टेज पे आ जाइए। अभी हम रजिस्ट्रेशन के पहले हम एक
रिपोर्ट लॉन्च करना चाहेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंट किया। अ, तो मैं रूपाली जी को भी स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी फॉर दिस रिपोर्ट लॉन्च ऑन जेंडर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन विद इन द मंडी प्रोजेक्ट। Well, we can we please have a copy of these reports to every panelist? You all can go through this, the findings of this report to understand how gender was integrated within this project. Please give them a huge round of applause. And before I let all of you go, I'll like to call upon stage Auntie Joshi, Chief of to felicitate our listeners on stage. We start with Dr. Nina. Rani Mishra. What is the source of Lakshmi Iyer. Manas Satpathy. Anita Kaur. Rupali Avadi. And Puna Raja, curator, panel, and so effortlessly steered the conversation. Please give her a huge round of applause to all our panelists for the extremely engaging and interesting insights. Thank you so much. There has to be a group. Anyone go state until that start. Thank you so much, Luhan. And with that, we draw closer to the end of this day-long national conclave. I'd like to invite on stage Mr. Aradha Das, Director Program Excellence Grameen Foundation, India, to deliver the closing remarks.
distinguished guests, honorable speakers, and esteemed delegates. I stand before you today with heart full of gratitude and deep appreciation as we reach the end of this great conclave on market access for smallholder farmers, leveraging digital platforms and inclusive value chains. On behalf of Grameen Foundation India, which was supported in this project by the Walmart Foundation, I would like to sincerely thank each one of your valuable presence and contribution to this important event today. This conclave has provided a platform for key stakeholders from the agricultural and farmers producer organization ecosystem to come together and address the critical concerns faced by the smallholder farmers, especially women. We have witnessed passionate discussions, thought-provoking presentations, and engaging interaction throughout the day, all focused on enhancing the livelihoods of these farmers who form the backbone of our economy and food systems. We started the day by shedding light on the challenges faced by smallholder farmers in the country, the predominance of small land holdings, lack of access to resources and technology, and dependence on intermediaries have hindered the growth and prosperity of these farmers. However, through this formation and strengthening of FPOs, we have seen positive developments in their bargaining power and market access. The insightful panel discussion and presentation by experts in various fields have added immense value to this conclave. We have explored gender inclusive value chains in agriculture, financial services for FPOs and smallholder farmers, database solutions for market access, and the importance of gender mainstreaming in agriculture. I want to express my gratitude to our chief guest, Dr. Ashok Dalwai, for his enlightening and thoughtful keynote address. Dr. A.K. Singh, Gigi Gati, and all the distinguished panel speakers for their valuable insights. I would also like to thank our esteemed partners and supporters, including Walmart Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Swiss Development Corporation, GIZ, and the government of Uttar Pradesh and its agencies. Your support and collaboration have surely played a pivotal role in enabling us to make a tangible difference in the lives of smallholder farmers and their communities. My special appreciation and thanks to Mr. Prabhat Lal, Chief Executive Officer, Grameen Foundation, for his opening welcome and guiding the team, the Mandi team, who has implemented this project for the last 2.5 years, for all the guidance that he has provided for the last 2.5 years. I must express my deepest gratitude to the organizing team whose tireless efforts and meticulous planning have made this conclave successful. And I would say it was a stupendous conclave that we have seen today. Your dedication and commitment to the cause of empowering small and marginal farmers are truly commendable. Lastly, I would like to thank all the delegates and participants who have taken time out of their busy schedules to join us today. Your presence here signifies your unwavering commitment to the betterment of smallholder farmers and the advancement of our agricultural ecosystem. Through such collective efforts, we can bring about lasting change and create a more prosperous and inclusive society. I would also like to thank the media partners who are here today, and their presence are always, something which is praiseworthy. Thank you very much, all of you. And at the end, I would also once again like to
मैं सबको जितने भी हमारे साथी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जो भी कृषक आए हैं और जो बहन लोग हमारे इतने दूर से आए हैं, हम सबको शुक्रिया शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो लोग अपना समय जो दिए हमारे साथ, और ये बहुत बड़े समय तक सवेरे 8 बजे से आप लोग का अभी 5:30 बजे जाने जा रहा है। तो मैं सबको मेरा नमस्कार और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। I would once again like to thank our esteemed speakers, guests, and colleagues for your time and participation. I have learned so much today and I truly, truly treasure it. And you all have been such a wonderful audience. On this note, this is your host signing off. We have high tea served outside, so please help yourself with some refreshments. Thank you so much and have I'll request everyone from Grameen Foundation